Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Mataji. I'm sorry. Can you hear me now? Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes, we can hear you. Okay. Thank you. Okay, so welcome everyone who are there on the YouTube. So welcome for the Bhagavad Gita Shloka contest. So just to give you a brief, this contest is specifically organized for children and children up to 15 years. And this contest will be divided across 3 sessions because we have the number of children who have enrolled for this contest are many children have enrolled for this contest. So this contest will be conducted over 1st April, 2nd April, and 3rd of April of 2022. And this is specifically focused on chapter 3 and chapter 4. And kids are expected to recite the shlokas and explain the meaning. Idea is that that the kids should, are encouraged to learn the shlokas, because unless there is a contest, kids would not take an initiative to learn the shlokas on their own. So yes, we have series of slots planned for various kids, and yes, we can start now. So the first candidate who is there for the shloka contest is Pranjal Dhote, and the assessment will be done by Mahapati Ramdas. I will be coordinating the event. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita chapter 3, verse 3.9. Athat karma punyatra loko yam karma bandhana tadhartam karma kaunteya mukta sangha samasara. Translation: work done as sacrifice for Vishnu does not cause material bondage. And therefore, O Arjuna, perform your work according to the prescribed duties and for his satisfaction, and thus you will be free from all bondage. Verse 3.12. Ishtan mogani vo deva dasyante yajna bhavika jayantana pradayyo yogu testena evasaha. Translation: in charge of all necessities of life, the demigod, thus satisfied by the performance of yajna, supply all necessities of life to the living beings in this material world. The ones who enjoy such gifts without offering them to the demigods in return are certainly free. Verse 3.13. Yagyashishashina santo muchyante sarva kindhishe papa neva chandyatma karanat. Translation: work done as So what do devotees do? Devotees are free from all sins as if eat food first offered to the Lord. The ones who prepare food for their personal sense enjoyment eat only sin. Verse 3.14. Annat bhavati bhutani parjanyadanna sambhava yajyat bhavati parjanyo yajya karma samudbhava. All the living beings subsist on food grains, and food grains are produced by rain. The rains are produced by the performance of yajna, and the yajna is born out of prescribed duty. Verse 3.21. Yadyadacharati shrestha tatta deveta rojana sayat pramanam kirite lokastadanu vartate. Whenever a great man performs an action, the common men follow. Whenever he sets standards by his exemplary acts, all the world pursues. Verse 3.27. Prakrite kriyamanani gune karmani sarvasaha
ahankara vimulatma kartahamiti manyate. The spirit soul, bewildered by false ego, thinks that he is the doer of all actions, but they are carried out by the three modes of material nature. Verse 3.30 Vai sarvani karmani sanyasyatyatmacetasa nirashirnirmamo bhutva yuddhasva vitatadvara. Therefore, O Arjuna, surrender all your works unto me with full knowledge of me, without any desire of profit, without any claims of proprietorship, free from all mentality and fight. Verse 3.37 Sri Bhagavanuvacha Kamayesha Krudayesha Rajo Guna Samudhava Mahashano Mahapapa Vidyenam Ihavainam. The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born out of material contact, which is born out of the contact through the material modes of action, and thus transformed into wrath, which is the all-devouring sinful enemy in this world. Verse 3.42 Indriyani paranyahur Indriyebhya paramana manastastu parabuddhi yobuddhi paratastu sa. Translation The working senses are superior to the dull matter, and the mind is superior to the senses. The intelligence is still higher than the mind, and the spirit soul, is even higher than the intelligence. Chapter 4, verse 1. Bhagavanuvacha imam vivasvate yogam Suktavanam Avyayam Vivasvan Manavetraha Manurikshvaka Vedrave. The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable knowledge to the Sun God Vivasvan. And when Vivasvan instructed this to Manu, the father of mankind, and Manu instructed this to Ikshvaku. Verse 4.7 Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam sritamyaham. Whenever and wherever there is decline in religious practices, O descendant of Bharata, and the practices of the religious and irreligious practices increase, I descend myself. Verse 4.8 Paritranaya sadhunam vinashaya sadhutam dharmasasthapanachaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to inhibit the miscreants and to re-establish the principles of dharma, I descend myself onto this world millennium after millennium. Verse 4.9 Janma karma cha medityam devam yoveti tarpata yatva deham punarjanma yati mameti sorjana. The one who knows the transcendental nature of my appearance and disappearance, on leaving this material body, does not take birth in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Verse 4.11 Yatha mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham mama vardamanu vartante manusya partha sarvasya. One who worships me in their own mood, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Pranjal.
So Pranjal, you chanted 14 verses, correct? 15, I guess. I have 14 verses, but anyway, so all verses, I think we memorized them very nicely, chanted also very nicely. Which any one verse that you liked the most, and why? I like verse 3.13. Yagyashishtashi nasanto. Hmm. Yagyashishtashi nasanto. As it describes that that devotees are free from all sins and material bondage because they first offer their results or they first offer their food or whatever to the Lord and then they accept it. So they are kind of dependent on the Lord, and this is how we should practice in our life so that we can be free from all sin and be free from material bondage. Correct. So what makes food sin-free? But Is it vegetarianism or offering? it is something that does not come in the modes of passion or ignorance. It has to be in the modes of goodness. It does not. It should not contain like consumption of meat or any other Hmm. weird, So it should be sattvic food, vegetarian sattvic food. But what makes it? Does that make it? Does it become sinless just because it is vegetarian sattvic? no, that does not make it sinless. You have just 50% to it, but you are only 100% when you offer it to the Lord. Hmm. So offering it to the Lord makes it sinless. Otherwise, even eating vegetarian food also will Causes cause bondage. Very nice. Very nicely explained. Do you know the meaning of the word yajna shishta? Yagyashishta means the ones the ones who are always Yeah. So yajna is a sacrifice, and yajna shishta is what remains after the sacrifice, the remnants of the sacrifice. So remnants is what remains. Remnants, whatever yajna is offering, and sacrifice yajna shishta is what remains after that offering. Whatever remains, that we are supposed to accept. Luckily, in our plates, everything remains. All the puris we offer, everything remains. Nothing goes back. We get five puris we offer, we get five puris back. But imagine if Lord were to eat, then he may give you just back one puri, and then you have to, all of you together have to eat just one puri. That's it. But Lord been very merciful, so he returned us entire bhoga as prasad. Okay, thank you so much, Pranjal. Very nicely chanted all verses. Keep learning new verses. Keep searching for which situation you can apply which verse. Like on your lunch table, on your dinner table, whenever you eat, you remember this Yajna Shishta Shinasanto, and then you say that, okay, if I have I offered it, why should I eat sin? I should not eat sin, so let me first offer it. So and so on and so forth. So there are so many beautiful verses in this section, and you remembered them all very well, and chanted also very nicely. Thank you so much. thank you for this opportunity and really sorry if I made any mistakes. No need to be sorry. Very nice, Pranjal. Haribol. Very nice. Very well done. So now we have Anurag. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Anurag. Anurag. Yes. So Prabhuji, can Anurag start? Yes, Anurag. Yes, Please start. Anurag, start. Shloka number 4.1. Shri Bhagavan Vacha Imam Vivasvate Yogam Yuktavanaham Avyayam Cham Vivasvan Manahe Praha Manurikshvaka Vebravet. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna said,
I instructed the science of yoga to the sun god Vivaswan. And Vivaswan instructed it to Manu. Manu is the father of mankind, and Manu in return instructed it to Ikshwa. Shloka number Ishwaku is name of his son. So Ikshwaku. Shloka number 4.2. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालिने महता योगो नष्टः परन्तप. The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science, as it is, appears to be lost. Shloka number 4.3. स एवायम् स एवायमया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्. This science of the relationship between the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee and my friend, and therefore can understand this science, and thus can understand transcendental mystery of science. Shloka number 4.5. Shri Bhagavan Uvacha Bahumive Vyatitani Janmani Tava Charjuna Tanyaham Veda Sarvani Natvam Veta Parantapa. The personality of Godhead says, many births both you and me, you and I have passed, but I remember all of them. You cannot. O subduer of enemy. Shloka number 4.6. रजोपि अजोपि संयवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्ममायया. Although I am unborn and my transcendental body cannot be deteriorated, and I am the Lord of every living entity, but still I come in this material world in every millennium in my original transcendental form. Shloka number 4.7. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutthanam tadatmanam srijamyaham. Whenever and wherever there is decrease in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise in irreligion, I will descend myself. At that time, I will descend myself. Paritranaya sadhuna vinashaya dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the misbehaviors, I re-establish the principles of religion by coming to this material world every millennium by millennium. Shloka number 4.9. Janma karma cha me divyam evam yo vetti tatvatah tyakva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna, the one who understands the transcendental
The one who understands my transcendental appearance and activities does not, upon leaving the body, takes birth again in this material world and attains my and attains my person and attains my abode. O Arjuna, Shloka number 4.11. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव व्रजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते नैति मामेति सो अर्जुन मनुष्य पार्थ सर्वशः मनुष्यः पार्थ सर्वशः all of us, as all surrender unto me, I award them accordingly. Everyone follows my guidance in all respects. O son of Pratha, Shloka number 4.34. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. It is to know the truth, we should take guidance of a spiritual master. Inquire him submissively and take his guidance so that he can impart the knowledge of Krishna consciousness because he knows the truth. Thank you. Okay, 10 shlokas, no? Yes. Okay. So these first initial shlokas that you chanted from Bhagavad Gita 4th chapter, what does it mean? What theme that comes out? Why is he saying that I told this to sun god? What is Krishna trying to say? That Bhagavad Gita was told before and was passing through many millenniums. Means before Krishna dictated it to Arjuna, it was already dictated to sun god and then was passed. So it is not a fresh knowledge that was concocted on the battlefield just because some Arjuna was his friend, so he asked questions. So immediately, abhi ke abhi, I thought of something and I is telling you on the spot. Nothing like that. This knowledge is supreme knowledge, is always in existence. Now I am telling you, but this has already been in existence for so long. And that how long? And then that he explains that this is where Krishna brings out his divinity, brings out that he is not, though he is appearing to be ordinary person in front of Arjuna as a chariot driver, taking a minuscule role, but he is something beyond. He doesn't belong to this world, neither, or he's far greater than what he's appearing to be. Suddenly he's saying that I remember all my past births. You and I have had many births. Bahuni me vyatitani janmani cha tava Arjuna. So he's bringing out his divinity factor. Up till now, in Bhagavad Gita, Krishna was not speaking about his God, who is supreme God. But this is where, from this section onwards, Krishna starts speaking about himself and present himself as the supreme personality of Godhead. And then he established himself as God and the only object of worship. And then he declined all other yogas. And then, in the subsequent chapters, 6th chapter, he declines how even
Dhyana yoga is so considered to be superior than karma yoga, is also of use. So perform bhakti yoga. So Krishna becomes the goal, bhakti becomes the means to achieve that goal. You need technique, right? How to achieve. If I'm given a goal, how should I achieve it? So bhakti is that means that is provided, and that is established in the subsequent chapters. Thank you so much, Anurag. You all chanted, and translation also you spoke very nicely. Try to see the practical application of these verses in your day-to-day life. Each of these verses, when you think of each of these verses in terms of your today's position as a student, and then when people around you challenge Bhagavad Gita, should be able to quote these verses and give evidence from the scriptures. Thank you so much, and please continue learning new shlokas. Chapter 3 also had very nice verses. I hope you still remember chapter 2 verses which you had participated earlier. So don't forget those very important verses are there in chapter 2, in chapter 3. Chapter 4 is again very beautiful, very nice verses, all nice verses. Thank you so much. Please continue learning new Thank you, verses. Prabhuji. Very nice, Hare. Anurag. A big haribol to you. Very nice. Indranil is joining? Yes, he is coming this device. Okay. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Indranil. Indranil. Good to see you. Hare Krishna. So Mataji, I am going to recite third chapter Bhagavad Gita. Oh, so Anurag did the fourth chapter, you Yeah, did yeah. third chapter. We purposely did that, Mataji, so that we don't do the same content. Acha, acha, okay. No, and you can teach him, you can learn fourth chapter from him, and you can learn third chapter from, you can teach him third chapter. Very nice. Yes. Okay, okay. ठीक है, carry on. Yes, Mataji. Shloka number 3.1. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय mukta sangha samachara. In this shloka, Krishna explains to Arjuna that whatever work we do in this material world, do it for Krishna's satisfaction. So we, in doing so, we will be free from this material bondage. For example, as a student, my work is to study. But and if I study for Krishna's satisfaction, I will not be binded by the results. Shloka number 3.12. Ishtan bhogan hi vo deva dasyante yajna bhavitaha tairdattan pradayebhyo yo bhunte stena eva saha. In this shloka, demigods get satisfied quickly by performing yajnas and provide us with necessities for achieving our goals. But if we enjoy fruit without offering it to the demigods, our behavior will be none other than thieves. Shloka number 3.13. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. In this shloka, Krishna explains the importance of bhojan, prasadam. Devotees of Krishna eat prasadam, food which is offered to Krishna before eating, and thus they are released from all types of sins. But those who eat food for their personal sense gratification, they are eating none other than sin. Shloka number
3.27 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. In this shloka, Krishna explains. In this shloka, Krishna explains the influence of false ego. So he says our activities are performed. Our activities are carried out by three forms of nature, which are sattvic, rajasic, and tamasic. But our bewildered spirit soul, when influenced by false ego, thinks that he is the doer of every activity performed. Shloka number 3.30. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. In this shloka, Krishna says to us and Arjuna how to get rid of this false ego. He says he says that we should surrender our work upon him, and with complete knowledge of him, without desire of profit, and with no claims of ownership, and free from lethargy, which is this means that we should do our prescribed duties. Through with full Krishna consciousness. Shloka number 3.37. श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्. Yes. In this shloka, the Supreme Personality of Godhead said, this is lust, Arjuna, which is born of contact with the material nature of passion. The material nature of passion, which after transforms into wrath, which is an enemy of this world. Shloka number 3.42. Shloka number 3.42. This is transformed. इंद्रियाणि पराण्याहुर. इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः.
Manasastu param buddhi yo buddhe param manah Paratastu mana yo buddhe paratastu manah paratastu saha. paratastu sa. In this shloka, Krishna explains the position of our senses, the mind, the intelligence, and the soul. So he says, our in every dull things, our senses are more superior. Our mind is much higher than our senses. Our mind is much higher than our senses. The intelligence is more higher than the mind, and the soul is soul is more superior than the intelligence. Prabhuji, now I have recited shloka number 4.7. Shloka number 4.7. Yada yada hi dharmasya यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान. Prabhuji, I am doing shloka number 4.7 and 4.8 together and then explaining the meaning together. Solid. Okay. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Whenever and wherever there is decline of religious activities and growth of religious activities, I myself descend to this material world. I myself descend to this material world to save the pious and destroy the unpious and reestablish religion again. I descend to this material world for millenniums and millenniums. Millennium after millennium. Millennium after millennium. Shloka number. Also, to re-establish religion, to re-establish the principles of religion. Yes, to re-establish the principles of religion. Shloka number 3.9. 4.9. 4.9. Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattvata tyaktva janma karma tyaktva deham punarjanma neti mameti. So Arjuna. So in this shloka, Krishna says that whoever understands my birth and my activity is transcendental, doesn't need to take rebirth in this material world. They are sent to my personal abode, which is Goloka. Thank you, Prabhuji. I have recited 10 shlokas. Okay. 10 verses you have recited, no? Yes, 10 verses. Okay. Any particular verse that you found useful, or you found any practical application? Yes. Or in your personal situation, you found this verse, remember this verse? Which one was that? Prabhuji, it was shloka number 3.9. So I learned that whatever thing I do, I should do it for Krishna. That means my objective should be that I am doing this for Krishna, so that I am not binded by the result. That for example, if I lose marks, like as a student, if I lose marks or fail for the exam, my mentality should be like, okay, it's okay. Krishna, I am doing this for Krishna. I will try again. I will try again and do my best. Or even when I pass exam with full marks, then I should not get like over excited about that. I should be like,
okay, this is for Krishna. This is my duty, so I need to do it. Yeah, very nice. So at our level, we can we can have Krishna as our goal. Like many times we talk in our day-to-day life when we take decisions, the simple purpose, simple parameter that we can have is, will Krishna become happy with I'm doing what I'm doing now, or Yes. he will become unhappy? Will it take me closer to Krishna? Will it take me away from Krishna with whatever I'm doing? Because doing everything for Krishna is also means doing everything according to the instructions of Krishna also. So if Krishna has told us not to do certain things, or do get indulged into certain things, not to eat food without offering, simple. So if wherever we are not able to offer, we should be worried. We should be careful of not getting into situations where we end up eating food which is not first offered. At least we should offer in our mind, in our wherever setup, whichever setup we are in, we should offer, and we should then eat whatever wherever we could be. Yes. So yadnarthat karmano nyatra, and it causes bondage otherwise. What does it mean? It causes bondage means it produces a result which will lead to repeated birth and repeated death. Well, because you have to take birth again, if you have to enjoy for those results, even if you might have done good work, and you have to enjoy for that, get some reward as a result of that good work. For that, you will have to take birth again. And if you have done something bad, then for that also you will have to suffer, and for that again you have to take birth again. So Bhagavad Gita not only teaches us how to do it, but what should be our ultimate goal in our mind. So that is also very important. So all the verses you chanted very nicely, and they all have a lot of practical application. Yes. Yes. And if you can think slightly a little bit more about this verse, why this must have spoken, how is this relevant for me, you will get those threads of meanings which you could apply even in today in your student life also. Everything can have direct applications. So keep thinking, and keep asking questions. Yes, Prabhu. Okay, thank you so much, Hare Krishna, Andrew. Prabhuji. Hare Krishna. Very Radha. nice, Indranil. Haribol. Thank you, Mataji. Very nice. Well done. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Ayush. Yes, we will start with Mataji, Ayush. I can leave. Yes, beta, you can leave. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Ayush, now you can continue. Ayush and then Abhay. Abhay. Yes, Mataji. Shloka number 3, chapter number 3, shloka number 27. Prakrate kriyamanani gunaya karmani sarvashah ahankara vimudatma kartahami iti manyate. The spirit soul bewildered, the influence of false ego. He thinks himself a the door of activities which is actually carried out by the three modes of material nature. Chapter number 4, shloka number 7. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijanyaham. Whenever and wherever there is a declined religious practice, O descendant of Bharata, and predominate rise of irreligion, Who comes? I descend myself. Hmm. Chapter number 4, shloka 8. Paritranaya sadhunam vinasaya cha duskritam dharma samstarpanataya sambhavani yuge yuge. To deliver the pious and annihilate the miscreants, as well as establish the principle in the religion. At that time I appear millennium after millennium. Done, Mataji.
Ayush, how old you are? Which standard you are in? Standard and 11 years. 11 years. 5th standard? Yeah, 5th. Okay. Okay, you've done 3 shlokas very nicely. And so which one you like? Which one shloka you like the most? Shloka number 7, chapter 4. Why so? आप हिंदी में भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. हिंदी इंग्लिश आपको जो कंफर्टेबल रहेगा उसमें बोल सकते हो. क्यों पसंद आता है आप बोल सकते हो. What do I say? I only don't know. Okay, okay. So यदा यदा ही धर्मस्य, अच्छा लगता है ना सुनने को? ऐसा राइमिंग है ना एकदम. Okay, so yes, it has a rhyming, but also it shows that when Krishna took birth, when Krishna appeared, he says, I appear, I come myself. I don't take, so Krishna doesn't take birth just like us. We take birth because of past karma, some activities we have done. So we've been taking birth after birth after birth. So last birth, this birth, next birth, we take birth to burn our karmas. We become child again, we become old, we become again very sick and die, and again become child, again grow. And this has been going on. This is called cycle of birth and cycle of death. But Krishna says he comes. He comes means just like Prime Minister doesn't go to jail. He may go to jail to visit and see the facilities over there. So he doesn't go because of his crime. जब Prime Minister जेल में जाते हैं, आज बोलते हैं कि मैं 15 अगस्त जेल में मनाऊंगा कैदियों के साथ. So it doesn't mean that he's gone to jail because he did something wrong. Because he wants to go, he can go anywhere in India. He's Prime Minister for the whole country. So जैसे प्राइम मिनिस्टर जेल में कभी भी जा सकते हैं और कभी भी अंदर जा सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं. बिकॉज कैदी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं प्राइम मिनिस्टर को कैसे आपने छोड़ा एक दिन में, मुझे भी छोड़ दो. नहीं, उनको तो सजा पूरी होने तक वहीं रहना है. बट प्राइम मिनिस्टर एट हिज ओन विल कैन गो एंड कैन कम आउट ऑफ इट ऑल्सो. वैसे ही कृष्णा अपने मर्जी से आ जाते हैं. कब आते हैं? व्हेन देयर इज लॉट ऑफ irreligion, increase of decline of religious practice and increase of miscreants. जो गलत चीजें इंक्रीज हो जाती है, रिलीजन डिक्रीज हो जाता है, तब कृष्णा बोलते हैं मैं आता हूँ. सो अभी भी तो जब 5000 साल पहले कृष्णा आए थे तभी भी ये था, तो अभी तो बहुत ज्यादा हो गया होगा. तो अभी तो कृष्णा को आना चाहिए. तो अभी कृष्णा कैसे आए हैं? तो कृष्णा है अभी, कृष्णा है अभी भी है. कृष्णा कैसे है? कृष्णा डीटी फॉर्म में है. तो और कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र के फॉर्म में है ना. सो कृष्णा नाउ कृष्णा हैज टेकन अपीयरेंस, बर्थ एज और अपीयर्ड एज इन फॉर्म ऑफ हिज मंत्र, महामंत्र. सो ही इज सेइंग आप मंत्र चैंट करो, आप माला करो, जप माला करो, हरे कृष्णा महामंत्र की माला करो, एंड देन यू विल बी सेव्ड. आई डोंट हैव टू पर्सनली कम, बिकॉज इफ आई कम आई हैव टू किल एवरीवन. बिकॉज अभी तो सभी मिसक्रिएंट्स है ना, तो सभी को मारना पड़ेगा. वो अभी तो कृष्णा बोलेंगे ऐसा तो नहीं करना मुझे, तो उससे फायदा क्या होगा, है ना. लोग तो समझे सुधरेंगे नहीं, तो लोगों को सुधारना है, तो उसके लिए हरे कृष्णा महामंत्र के फॉर्म में नाउ कृष्णा हैज अपीयर्ड. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र. ओके, एंड वी हैव टू टेक दर्शन ऑफ डीटी, वी हैव टू ईट प्रसाद, वो सब भी करना है. हाँ, सिंपल है ना. कृष्णा कॉन्शियसनेस, माला ही तो करनी है, सब फ्री है कि नहीं. भोग चढ़ा के वो खाना है, और बस कहीं दर्शन देने जाना है, नजदीक मंदिर हो तो, है ना, जहाँ कृष्ण दिखे वहां पे जाके दर्शन देना है. सो अब वो करते रहना है और क्लासेस अटेंड करना, ताकि आपको और गाइडेंस मिले ये कैसे होता है. नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा श्लोका याद करने हैं, याद रखना. ओके. हाँ प्रभु जी. यस प्रभु जी. ओके, हरे कृष्णा आयुष. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. आपका नाम? अभय. अभय. अभय आनंद. ओके, आप कहाँ से हो अभय? और आप और आयुष कौन से, कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं? वसई.
Vasai. वसई में रहते हो, वेरी नाइस. यस अभय. Yes, you can start, Abhay. Yes. Chapter number 3, Shloka 27. Prakrate kriyamani gunai karmani sarvashah ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Meaning, the spirit soul bewildered by the influence the false ego thinks himself the door of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. Chapter number 4, Shloka 7. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं स जान्यहम्. Meaning, whenever and wherever there is a decline, religion practice or descendant. Of किसका descendant? Descendant of Bharata. भारत means, हाँ उनका नाम है. अर्जुना को बुला रहे हैं कि आप भारत हो. भारत मतलब you are descendant of Bharata. भरत महाराज जो थे उनके आप पोते हो, great grandson of Bharata and predominant rise of irreligion. At that time I decent myself. Chapter number 4, Shloka 8. परित्राणाय साधुर्ना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. The deliver pious and to annihilate the miscreants as well as to reestablish the principle of the religion. I myself appear millennium and after millennium. Thank you, Mataji. Thank you, Babuji. आयुष, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? थर्ड में. ओके आयुष, काफी अच्छा, आपने भी अच्छा याद किया है. ये 3.27 में ना गुणास का जिक्र किया है. They said there are gunas. Do you remember कौन से, how many gunas are there? No. Okay. So there are 3 gunas. सत्व गुणा, रजो गुणा and तीसरा याद है? No. तमो गुणा. So इंग्लिश में बोलते हैं इसको mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. तो आप अभी क्लासेस अटेंड करेंगे तो ये सब बाय हार्ट हो जाएगा आपको. जो रेगुलर क्लास में आते हैं ना उनको ये सब पता है. तो you come regularly on every Sunday, Saturday, Sunday जो आपका डे हो, and attend all the classes because in classes all these things are discussed. So ये कैसे होता है कि हम काम करते हैं और बोलते हैं गुणा ने किया है, गुणास ने किया है. So that is all revealed in the classes. Okay, so you attend classes regularly. Okay, and are you chanting every day? Yes. Very good. And your brother also chant, Ayush? He also chant around? Yeah. They're very sincere in chanting. They chant around 10 rounds every day.
They are very nice. sincere in attending classes also. They attend the 18-day Bhagavad Gita as well as they attend Sunday classes. So both of them are very sincere kids. Very nice, very nice. So, so learn more shlokas. No, you're sincere, so you should have learned more shlokas. So take time out. अभी vacation में, summer vacation होगा ना, अब, तो उसमें आप और श्लोकास learn करना. And then send recording to Mataji that see I have learned more. 3 is okay. That's good start. But you should learn more, and then you should also ask questions about this shloka. कि ये meaning तो ऐसे लिखा है, but उसका क्या मतलब है माताजी? You can ask questions also, because remember इसमें ऐसे एक भी चीज नहीं है कि जो useless है. Krishna ने whatever Krishna has spoken is all useful, and third standard for school student also this is useful. Also it is useful for me. It is all useful for old persons. It is useful for ladies. Everybody it is useful for. So ask questions to Mataji कि ये ऐसा क्यों बोला होगा कृष्णा ने, इसका क्या मतलब हो सकता है, ऐसा क्यों बोला है, ये तो इसका ट्रांसलेशन तो ये है, बट ऐसे सचमुच कृष्णा आते हैं क्या, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम तो अब आज क्यों नहीं है. Then as I was telling to your brother that Krishna has come today in form of a deity. आप हरे कृष्णा मंदिर आएंगे तो आपको कृष्णा दिखेंगे वहां पे. Then Krishna is there in his name. तो आप जब हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हो तो you are directly connecting with Krishna. So Krishna is there. We just have to access him properly. Okay. Yeah. So and get benefit from him. Thank you, Abhay. Thank you, Ayush. Very nice, Ayush and Abhay. Very nice. Well done. Thank you, Mataji. Okay, so now we have Akshay. Akshay, Hare Krishna, beta. You'll have to switch on your video. Haan, take, right. Yes, Mataji. Yeah. Yes, Mataji. Mataji, may I start? Yes, Hi, dear. Dev. Please start. Yes, beta. Yes, Mataji, Ayush. I'm going you to. can- Yeah, एक minute. Hare Krishna, Ayush wants to leave. Yeah. Yeah, Ayush, you can leave. Huh? Yes, Akshay. Yes, please go ahead. Yes, Mataji. Mataji, I'm going to chant 10 shlokas today. Very nice. Very nice. Hari bol. Yes, Mataji. So, first verse is chapter 4, verse number 1. Shri Bhagavanu Vacha Imam Vivasvate Yogam Proktavan Hamavyayam Vivasvana Manavetaha Manorikshva Kave Bhravid. Meaning of the shloka is that Krishna first passed down the supreme knowledge of the Bhagavad Gita first to Vivasvan, the sun god. Vivasvan then passed down this knowledge to Manu, who was the father of mankind, and Manu passed down this knowledge to Ikshvaku. Mataji, then chapter 4, verse number 2. Evam parampara praptam imam rajasayo viduhu sahakale nahamahata yogo nashta parantapa. Mataji, so the meaning of the shloka is that the knowledge of the Bhagavad Gita was always passed down in disciplic succession, that is from guru to disciple, and saintly kings also understood it in that way, but eventually this chain was broken and the knowledge of the Bhagavad Gita was lost. And chapter number 3, verse 37, Shri Bhagavanuvacha Kama Esha Krodha Esha Rajogona Samudbhavaha Mahasano Mahapapma Vidhi Ina Iha Vedina. The meaning of this shloka is that it is lust which is born due to contact with this material world, and due to continuous contact with the material world, this lust is transformed into wrath, and wrath is the all sinful devouring enemy of this world. Mataji, then chapter 4, verse 7. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam shijanyaham. Mataji, the meaning of this shloka is whenever and wherever there's a decline in religious practices, and when there is an increase in irreligious practices, Krishna himself will descend upon this earth to re-establish dharma. Chapter 4, verse 8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. The meaning of this shloka is that every millennium Krishna himself will descend upon this earth to give pleasure to his devotees and to kill the miscreants, and also to re-establish dharma upon the material world. Chapter 4, verse 9. Janma karma cha me divyam evam yo vedi tatvatah
Adeham punarjanma neti mamiti sorjana. The meaning of the shloka is whoever knows the transcendental nature of Krishna and will, upon dying in the material world, will not take rebirth here, but instead will go to Krishna's eternal abode. Mataji, then Mataji, I don't remember the shloka number, but I know the shloka. Yeah, that's fine. Go ahead. No problem. Yes, Mataji. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Sunichaiva Swapakecha Sunichaiva Swapakecha Panditaha Samadarshinaha. Yes, Mataji. Mataji, the meaning of the shloka is that a person, a self-realized soul, will see everybody in the same way. He will see the same thing in an elephant, a dog, a outcast, and a gentle and learned brahmana. Mataji, this is because he is a self-realized soul and has understood the fact that we are not the body, but we are the soul, and thus sees everybody in the same way. Yes, Mataji. Bhoktaram yagna tapasam sarvaloka maheshwaram. Bhoktaram yagna tapasam sarvaloka maheshwaram. Sahrdam sarvabhutanam sahrdam sarvabhutanam. Nyatva mam samtimrichati. Nyatva mam samtimrichati. The meaning of this shloka is that Mataji, so whoever understands the fact that Krishna is the receiver of all the austerities and sacrifices made will attain peace because he will be free from all the material miseries. Yes, Mataji. And yes, Mataji. Vitaraga bhaya krodha manmaya mamupasritah. Vitaraga bhaya krodha manmaya mamupasritah. Bahavo jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Mataji, I'm not sure after that. Which one you are chanting? Which this is from which chapter? Prabhuji, chapter Now 5, I think. 5. Okay. Prabhuji, I think 5.18. 5.18 you done. Vidya Vinaya Sampanne, that is 5.18. You also chanted 5.29. Bhoktaram Yajna Tapasa Sarvaloka Maheshwaram. Now which one you are changed? Which one you are chanting now? Sir, Prabhuji, Vitaraga Bhaya Krodha. Vitaraga Bhaya Krodha. Okay. Yes, Prabhuji. You remember that? Yes, Prabhuji, but I don't remember the last line. Okay. Yes, Prabhuji, that's it. That's it. No? All right. So Akshay, which you're in which standard, Akshay? Prabhuji, 7. 7th standard. Okay. And stay in Mumbai or where do you stay? Prabhuji, in Bangalore. Bangalore. Well, nice. Okay. So Akshay, so this 4.9th verse, which says that Tyaktiva deham punarjanma naiti mamiti so Arjuna. So it's talking about reincarnation, and Krishna says that. So how do you see this verse? What do you learn from this? So this has not been the part of discussion. If you have heard the flow of Bhagavad Gita, it starts with it's happening in between. You know, it's on the battlefield. Two armies are prepared, ready to fight with each other. All the warriors are ready, just waiting for the final bugle to be, blown, and then everybody will start shooting their arrows. And then Krishna starts speaking Bhagavad Gita, and then he says, there is no punarjanma. If you just know my birth, the reason, the transcendental nature of my appearance, that is janma, and activities, karma. If you just know these, you will not take birth again. Yes. So how significant this statement is? How do you see this in the context of what was happening in the Bhagavad Gita? Prabhuji, I couldn't understand. Could you repeat? You couldn't understand. Okay. So how do you understand this verse? So
I'm saying, is it by mistake Krishna has spoken, or what is the context in which this was spoken? What do you think it was? Why it was spoken like this? Prabhuji, because like we are like the way we are born in this material world is because we always earn desires, and like we started out as being contented and our souls were contented, but eventually we wanted to enjoy ourselves instead of caring and just being happy with what we have. So we were led astray into this material world. So it's actually kind of significant because we understand that we are going astray in this material world because of the various desires which are present here in the form of mobile games or like expensive furniture, or there are many things which are distractions in the material world which distract us from like Krishna consciousness. And so it's actually very significant that we try to learn about Krishna, because only way we'll go back to Krishna is upon our death when we think about him. But it's almost like impossible to do so if we don't learn or like think or do anything related to Krishna in our entire life. So it's very important. Yes, and for that, Krishna is giving a hint that how will you develop that consciousness when you learn about me. So knowledge of Krishna will take us to Krishna. Knowledge of Krishna will take us to Krishna. So you have to be hungry and thirsty to learn about Krishna, to know about Krishna. ये कैसे क्यों बोला होगा कृष्णा ने? Why did he say it like this? Why did he do it like this? And all this information is available in form of Bhagavad Gita, in form of Bhagavatam, through the stories and through the narrations. And it has to be how it has to be learned. Evam parampara praptem. You have to learn from those who have learned it and living according to the instructions of Krishna. Okay, thank you so Yes, much, Prabhuji. Akshay. You've done very well. Thank you, Prabhuji. Very nice, Akshay. Hari bol. Very nice. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Okay, so now we have Ram. Ram, will you switch on your camera? Yes. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna, Ram. Dandavat Hare Krishna pranam. Ram. Good to see you. Thank you, Prabhuji. So, Mataji and Prabhuji, today I will tell 50 shlokas, and one of them I can't learn that meanings. No Is it worries. okay? No worries. Yeah. No worries. Okay, Mataji. So, I will start. Hare Krishna. 3.9. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर. Meaning, the work that done for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondages in this material life. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will also remain free from bondages. Next, 3.12. इष्ठान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तन्न अपराधेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. In charge of various necessities of life, the demigons, being satisfied by the performance of yagna, will supply all other necessities to you. But he who enjoys such gift without offering to the demigods in return is certainly a thief. 3.27. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. Meaning, the spirit soul, bewildered by the influence of false egos, thinks himself of the doer activities that are actually carried out by the three modes of material nature. 3.30. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. Therefore, O Arjuna, surrender all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy and fight. 3.37. काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवः महसानो महपमा विद्येनाम इहवेरिनाम. Meaning, the Supreme Personality of God had said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later became into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world. 3.42.
इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः. Meaning, the working senses are superior to the dull matter. The mind is higher than the senses. The intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. 4.1 Imam Vivasvate Yogam Proktavahan Am Avyayam Vivasvana Manave Praha Manu Ekskave Bravita. Meaning, the Supreme Personality of Godhead said, I instructed the imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to the Manu, the father of mankind. And later, Manu in turn instructed it to the Ikshvaku. Next 4.2 Evam parampara praptam imam rajarshyo vidu sahakale nehmata yogo nashta parantapa. The supreme science was thus received through the chain of disciple succession, and the saintly king understood it in that way. But in course of time, the science as it is appear has to be lost. 4.5 Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tani aham veda sarvani natvam vete parantapa. Meaning, the Supreme Personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि अहम्. Meaning, whenever and wherever there is dislike in religion's practice, O descendant of Bharata, and the predominant rise of the irreligions, at that time I descended myself. 4.11 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Meaning, to deliver the pious and to annihilate the miscreant as well as to reestablish the principle of science, I myself appear millennium after millennium. 4.9 जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा मम अन्येति मम एति सो अर्जुना. Meaning, one who knows the transcendental of my appearance and activities, which does not leaving the body take his birth again in this material world, and attains my internal abode. Oh, next 4.11 ये यथा मम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि अहं मम वर्तं नु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः. As all surrendered unto me, I rewarded them accordingly. Everyone follows my path in all respect, O son of Partha. 4.34 तद्विधि प्रणिपते न परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिशा तत्त्वदर्शिना. Meaning, know that by complete surrender, inquiry and service, you will receive instruction from the who have gained knowledge through direct realization of the internal essence. Mataji, and I have learned one more, 15th one, but I can't learn his meaning. Can I No tell? worries. Yes, please. एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तथैव भजाम संस्थाभ्यात्मात्मनात्मा जाहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Which was this last shloka number? Mataji, 3.43. Okay. Very nice. Over to Prabhuji. Okay, Ram, how old you have become now?
know each other for last Probably two, 12 two years. years. 12 years. You're in which 11 standard complete, then? 12 is running. 7th standard. No, Prabhuji. 6th standard or 7th standard then? Fifth. 5th standard. Okay. Okay. So Ram, this section of all the section you've chanted all shlokas very nicely. Which one you liked the most? Prabhuji 3.9. Why so? Because Prabhuji in this sloka, Krishna tells that what do you want to do, please do, but completely surrender these to me. Otherwise, work all these bondages in this material world. And how come how there is a bondage? We don't see any bondage, right? Why he say what bondage? What do you mean by bondage? Prabhuji, whenever we not surrender to Krishna anything, like we eat prasadam without offer bhoga to Krishna, so at that time we eat the pap. We eat sin only, but Yes. we so this creates a reaction, Yes. right? So the bondage happens because of those reactions. Yes. And so there could be some good reactions, there could be some bad reactions. And when these reactions start accumulating, then those reactions come back to us as fruits. Yes. And that for enjoying or suffering those fruits, we have to take birth again. So this bondage, any action that you do or without Krishna in the center, without having Krishna's without in a non-Krishna conscious way, will produce a fruit, and that fruit is unavoidable. Whichever birth we may go to, we get that fruit. So sometimes we get a very bad day. All these are all karmic reactions. We keep suffering and we keep enjoying. Yes. So we should be very careful. So we should know why we are enjoying today in today's world also, and why we are suffering whenever we suffer. Yes. Because of these actions, and hence this knowledge that our actions have consequences, our actions have fruits for which we are responsible for our actions, should help us do correct actions in today, help us take right actions today, so that we don't produce new fruits for which we don't have to come back again. Yes. Thank you so much, Ram. You attend classes regularly now? Yes, Prabhuji, but sometimes I missed because my exam was coming. Okay. soon. Exam times, missing classes during exam time is okay, but not otherwise. Okay. Okay, you attend all other classes and keep learning more shlokas. So this entire section, 3rd chapter and 4th chapter, is have all beautiful shlokas. Should generally also know them. I could have asked more questions, but we have to go to others, so I'll not ask more questions. Okay. Okay, Prabhuji. Thank you so much, Ram. Very nice, Thank you, nicely chanted all Prabhuji. verses. Hare Krishna. Very Hare nice, Ram. So second chapter के कितने 17 श्लोकास learn किए थे ना? Yes, Mataji. अभी इसके 15 हो गए, तो मतलब 32 श्लोकास तो हो गए भगवद गीता के. सेकंड चैप्टर की सरप्राइज टेस्ट लेनी है. चलो, very nice, very good. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Dandat pranam. Dandat Dandat pranam. pranam. Hare Krishna. So Janvi will join now Yes, Mataji. in the same device. Yeah, same. Okay. Okay, Mataji. Mataji, but he just give him 2 minutes. Okay, then we'll go ahead with Neha, and then by the time Janvi joins in, okay? Okay, Mataji. Yeah, okay. Okay. Yeah. Yes, Neha, are you there? Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna, Neha. Yes, One Mataji. second. Just one second. Just one second. Yes. Yes, we can start. Shloka 3.9.
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता sangha samachara. Translation: work has to be done for satisfaction of Vishnu, otherwise work can cause bondage in this material world. We should do our prescribed duties for the satisfaction of Krishna, so we can always remain free from bondage. Shloka 3.12. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दातानप्रदैभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन इव सः. Translation: In charge of various necessities of life, in charge of various necessities of life, the demigods being satisfied by the demigods being satisfied by the performance of yajna will provide will supply you will supply necessities to you. But one who enjoys but one who enjoys the gifts without offering it to demigods is certainly a thief. Shloka 3.13. यज्ञशिष्टसिनः सन्तो मुष्यते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पश्चान्तात्मकारणात्. Translation: The devotees of Lord are always released from all kinds of sin because they offer the food to the Lord and eat that as prasadam. But one who cooks the food and eats it for his own satisfaction and enjoyment and doesn't offer it to God, he is eating only sin. Shloka 3.37. Shri Bhagavanuvaच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा ये महासनो महापाप्मा Vidyeham iha vairinam. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, Arjuna, this is lust only, which comes in contact with the material mode of passion and then transforms into wrath, which is the all-devouring sinful enemy of this world. श्लोका 4.7. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Translation: Whenever and wherever there will be decline of religious practice, O descendant of Bharata, whenever there will be rise of irreligion, that time I will come. I will myself descend into this material world. Thank you. Hare Krishna. So Neha chanted 5 verses, right? Yes, Prabhuji. Okay. So this 12 and 13 verse, if you remember, thief and sin. So 12th verse especially, can you tell us more? Why thief? What is going on there? Why is Krishna must be saying that if you don't offer it back to those who supply, it's like a stealing? Why is he saying that? You can answer in Marathi, English, whatever you are comfortable with. तुला मराठीत सांगितलं मराठीत सांग तसं काही नाही. Prabhuji, because the demigods are taking efforts and giving us, and especially Krishna, this is Krishna's house and we are living here. So whatever we get to eat and whatever things we have, we should offer it to Krishna and take his blessings. Because whenever we go in others' house, we don't steal whatever is there. We ask them and eat, or if they give, we eat. So same way, this is Krishna's house. So we should offer it to him and then eat. We should not like just only take and eat. Very nice, very nice. So the demigods are in charge of supplying various necessities. Now, when you take, can we prepare anything, any lunch, any dinner, any rice, any chapati, can we make on our own? No, without using facility given by demigods, we cannot do anything. Even a grain of rice cannot be manufactured on our own. We need earth, we need fire, we need water, we need light, sunlight, and everything we need, and then only a grain of rice can be manufactured. So whatever we have, actually independently we cannot live.
without using the facilities given by demigod. Demigods supply because Krishna want to supply. So if we offer it to Krishna, that is best. But if we cannot offer it to Krishna, at least offer it to those demigods. So the cycle of sacrifice that has been set up in the world there's a minimum requirement that if we cannot offer it to Krishna for some reason, we should at least offer it to demigod. We should not eat it without offering. Because that is sinful. That is like a stealing. You rightly said in a very nice example that you gave, that it's like stealing it. You can't steal like this, and that has reactions. Then Krishna says, if you don't offer it to me, you are eating sin. So every time you eat food, you incur small quantities of sin. So that's how it is. Unfortunately, people don't know. So you know it now. Okay, so don't eat anything without offering. Okay. Yes. Okay. Hare Krishna. Very nice, Neha. So I realized the first time you had appeared for chapter 2, that time your pronunciation and now your pronunciation, there is a vast difference. So now your pronunciation, everything is very good. I mean, I was really happy and really, amazed to see your improvement from chapter second Shloka contest and now third and fourth. Very nice. Very good. Well done. You just need to improve the quantity of shlokas. So 3 should go to 30. You did 5, but yeah. Yeah, 5 there's should go to 30. scope to increase that. Okay, very nice. Well done. Sure. Thank you, Prabhuji. Mataji. Bye. Bye. Hare Krishna. Yes, Janvi, you are ready? Yes, Mataji. Okay, sure. Very Hare nice. Krishna, Dandavat Pranam. Dandat Pranam. Hare Krishna, Janvi. Dandat Pranam. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. So, Mataji, shall I start? Yes, dear. And actually, I have only learned 10 slokas. Okay, that only is good, not a problem. That is good that you're feeling that you only learned 10. One thing that is, I have exams, that why. And the second thing, I not start early to learn. So, that is the second problem. No problem. After you finish your exams, you can learn all the 20 shlokas. Yes, yes. Okay, chal, yeah. Yes, No that? problem. Yeah, please. Okay, so first verse is 3.9. Yagnarthat karma nonyartha lokoyam karma bandhana tad artham karma kaunteya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for a Vishnu has to be performed. Otherwise work cause bondage in our life and in this material world. So, O son of Kunti, perform your all prescribed duties for my satisfaction, and in that way you will always remain free from the bondage. Second, 3.12. Ishtan bhogan hi vo deva dasyante yagna bhavita tardattad aparadhyabhyo yo bhutestena eva. In change of various necessities of life, the demigods, being satisfied by performing the yagna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is a certainly thief. Third one, 3.27. Prakriti kriyamani gune karmani sarvasya ahankara vimudatma kartaham iti manyate. All activities are carried out of three modes of material nature, but in the ignorance, the soul delucated by the false identification with the body, like thinks of itself as a dough. Fourth, 3.30. मयि सर्वाणि कर्माणि संज्ञस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर. Therefore, O Arjuna, surrender all works unto me with full knowledge of me, without desiring of profit, and free from fights. Fifth, Free from lethargy, fight. fights. Sorry. Yeah. Fifth, 3.37. Shri Bhagavan Uvacha Kam Esha Krodh Esha Rajoguna Samudbhava Mahasano Mahapapma Vidyenam Ihiverinam. The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born in contact with the material mode of passion and later transformed into worth, anger, and which is all devouring sinful enemy of this world. Then 3.42.
इंद्रियाणि परन्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनतस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सम्. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. Then 4.1 Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivasvan Manuve Praha Manur Ishwake Bravita. The Supreme Lord Sri Krishna said, this entire science of yoga to the sun god Vivaswan, who passed it to Manu, and Manu in turn inspired it to Ishwaku. 4.2 Imam parampara praptam imam rajasya yo vidu sakale neha mahata yogo nascha parantapa. Translation: In this way, scholar kings knew about the yoga through the traditional, but through the long passage of time, this yoga has been lost here. O scorcher of force. Then 4.5 Shri Bhagavan Uvacha Bahuni me vititanam janmani tavacha arjuna Tani aham veda sarvani natvam vede parantapa. The Supreme Lord said, both you and I have had many births. O Arjuna, you have forgot them. Will I remember them all, O scorcher of force. Then 4.7 Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata abhyukthatmam adharmasya tadatmana shujaya aham. Whenever there is a decline in regions and an increase in unreachness, O Arjuna, that time I manifest myself on the earth. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Janvi. Hare Krishna, Prabhuji. So thank you so much for chanting nice 10 verses. So in 3.27, do you know, can you tell me why Krishna is saying that soul think he's the doer? So for example, if you give exam, if you prepare, you just mentioned about exam, you give, you prepared for your exam and, you know, prepare nicely, go on time to exam and give nice paper, write nice papers and get nice marks. So you will say that you did it, right? Why is Krishna saying that soul thinks that he's the doer, and he's a problem with that? Not only saying that soul thinks like this, but he has a problem with it. He said he's indicating he should not think like this. Why do you think ऐसा क्यों होगा? So, like there are three types of mode. First, one of them are ignorance. So, whenever we are thinking like this, then I did this, we are not thinking about Krishna. So that is we are going in mode of ignorance. So that's why Krishna is telling that means a soul sometime do like that. That's yeah, sometime pass in exam for very good marks we got, and we should not tell that is of my, I mean, I do that. We should tell that is Krishna's mercy, so I can do that. So Krishna is so that Krishna is telling do means karma, maybe, right? Correct. So Krishna is saying that even if you do it in goodness, it is still not good enough, because goodness में भी आपको अहंकार आएगा. You will get a result, so you will feel very proud. Goodness मतलब क्या? आपने बिना कॉपी किए, बिना चीटिंग किए, आपने अच्छे से एग्जाम दिया. Ignorance like चीटिंग करके एग्जाम दिया, पैशन में चीटिंग करके एग्जाम दिया. But ignorance, goodness में you studied sincerely, you got up early morning, chant करके आपने study किया. But you should once you study, once you give your exams, then you should offer that results to Krishna. Whatever Krishna wants, he will give. Whatever number of marks Krishna wants, he will give, and I will improve. Because then they are not you're not detached from action, you're not detached from study, you're detached from result.
Study karte samay, you have to do study, thinking that Krishna has given me intelligence, Krishna has given me facilities to study, Krishna has given me nice parents who are paying nice fees, giving me all books. So all the facilities available because of Krishna's mercy. So I should make best use of it. So this is where you have to, while studying, you have to study like this. But once you have given the exam, then you have to say, I have to take whatever Krishna gives. Yes, and maybe in the second chapter there is one shloka. In that shloka, Krishna is telling Krishna is telling to Arjuna that you should not means you should not depend on the result. Result is in my hand. You only कौन सा just श्लोक है वो? that I exactly not remember, but It's famous श्लोक 2.47 2.47 याद है? कर्मण्येवाधिकारस्ते. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Yes, yes. Very true, very true. So all these are linked. Thank you so much, Janvi. आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया. Thank you. Keep Janvi attending तो- all classes, okay? Okay. Okay, very nice. Yes, sir, Mataji. Yeah. So Janvi had set a bar last time. कितने गए थे आपने? 17, 18 ऐसे कुछ किए थे ना last time भी? Highest था, I think. Last time Ram ने More than 17 20. किए थे. आपका And 20 था no, शायद. no, I have 15, 16 56. something. See. So you had set a very high bar. So I was expecting that you will do 15, 16 this time. Yes, even I know that Mataji will tell this thing to me. So your expectations from you are very high. So next time ensure that you learn. जितने दिए ना उतने सारे कर दो. पहले से ही plan करके सब कर दो. Yes. Okay, chalo. Very good, very nice. So Ram was saying that he can give second chapter test also. Yes. So Janvi can also give, na? Second chapter Yes, surprise but- test. But we only have to revise once. Okay. Later we'll do. Later Yes. we'll do 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. हाँ, combine Yes. करेंगे. Combined we'll do. Okay. ठीक है, चलो, very Very nice. Hare Okay, Hare Krishna. Krishna. Okay, so now we have Om. Om. We can't see you. Hare Krishna. Shall I leave, Mataji? Yes, Janvi, you can do. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna Om. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Om, you can start. Mataji, chapter- Kar. Yes. Bhagavad Gita, chapter 3, words यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तद् अर्थं मुक्त संग समाज विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ महत्व केले पाहिजे. भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त आहे. भगवद गीता. Oh, I think we lost him. His bandwidth was very low. 1 second, he will join again. Divisha is joined. Is she managing the waiting room? Hare Krishna You're on Prabhu. mute. Hare Krishna, Divisha. Dandavat Pranam. Yes, Dandavat Prabhu. Pranam. You are managing waiting room? I'm managing. Sorry, Prabhu. So Om has come. Om, let's have Om. Om, you're there? Om is the last person today for the today's this thing. Okay. Yeah. Om, your bandwidth is little low. What Mataji? This is better. Yeah, you come in the good connection area. तुझं bandwidth slow आहे. जिथे तुझं connection चांगलं असेल ना network bug. Okay Mataji, wait. हा.
We just had 10, na? Or Sorry? we just had 10 participants today. We could have gone more because then tomorrow we Yeah, could yeah, have yeah. got some. Right. No, actually, a few of them wanted to prepare. Okay. So they, at the last moment, they got their Shifted slots to changed. tomorrow. So we had around 17, 18 today. Okay, Many of them got slots changed for Okay. tomorrow and day after. Yes, Om. Om, if you want to keep video off, maybe that quality will improve. Audio quality may improve because of the lesser bandwidth consumption. That's also okay. So ओम आता काय कर तू तुझा मग बघ आता ना तू हे व्हायला लागलं ना डिस्टर्बन्स व्हायला लागला तर मी सांगेन तुला व्हिडिओ ऑफ करायला कारण की मग तू काय बोलतो ते ऐकूच नाही येणार मग येते माताजी. हा आता येते पण तुझी बँडविड्थ आता अजूनही लोच दिसते. नाही ठीक आहे. बरं ठीक आहे चल कर चालू कर नो प्रॉब्लेम. हा आता बरी आहे कर. हा वर्ड 27 करते क्रियमानानि कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते. मिथ्या अहंकाराच्या मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो. म्हणून हे कोणतं वास्तवाने प्रकृतीच्या 3 गुणाद्वारे कर्मे केली जातात. भगवद्गीता chapter 3 verse 30 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसः निर्मो भूत्वा विगतजर. म्हणून हे अर्जुन माझ्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन मला तुझी ओम परत आला. हा ओम व्हिडिओ ऑफ ठेव. हा ओम व्हिडिओ ऑफ ठेव. हा व्हिडिओ ऑफ ठेवून बोल. चालेल माताजी. हा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्मो भूत्वा युधस्व विगतजर. म्हणून ट्रान्सलेशन म्हणून हे अर्जुन माझ्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन मला तुझी सर्व कर्मे समर्पित करून लाभेचा न ठेवता स्वामित्वाचा दावा न करता आणि आलस्य रहित होऊन युद्ध कर. Bhagavad-gita chapter 3 verse 37 श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्र माशोनो मापांपा विद्वनेमी वेदिनम. श्री भगवान म्हणाले हे अर्जुन रजोगुणाच्या संपर्कातून उत्पन्न झालेला हा काम आहे आणि नंतर तो क्रोधामध्ये रूपांतरित होतो. तोच या जगताचा सर्वभक्ष्य महापापी शत्रू ठरतो. भगवद्गीता चॅप्टर 3 वर्ड्स 42 इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रिय परम मनस्तस्तु परा बुद्धिर परस्तु बुद्धीपेक्षा बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. माताजी. So Om 5 verses केले ना तू? 5 verses you chanted. हो प्रभुजी. Okay. Yes. So this last verse, can you explain that verse again? What is it saying? ते काय सांगतात एक्झॅक्टली भगवान? मराठीत सांगितलं तरी चालेल ना? काय प्रभुजी? 3.42 वर्स होती ना, त्याच्यामध्ये भगवंत काय सांगतायत अर्जुनाला?
एक्झॅक्ट काय सांगतात, व्हॉट इज द काय पॉइंट इन सेइंग प्रभूजी ऐकू त्याच्यात येत नाही. ऐकू येत नाही. आता येतंय, तुझं व्हिडिओ ऑफ कर चालेल, तुला हा बँडविड्थ आता जास्त येतंय मिळेल. प्रभू. ओके. 3.42 वर्स मध्ये जी हायरार्की दिली आहे, ऑर्डर दिली आहे ना, ती काय आहे? व्हॉट इज दॅट ऑर्डर? कॅन यू एक्सप्लेन दॅट अगेन? आणि का दिली असेल? सो दॅट ऑर्डर काय होती की डेड मॅटर असतं. हे टेबल आहे फॉर एक्झाम्पल. डेड मॅटर पेक्षा सुपिरियर कोण आहे? द ऍक्टिव्ह सेन्सेस, वर्किंग सेन्सेस. वर्किंग सेन्सेस म्हणजे युअर एबिलिटी टू स्मेल, टू हिअर, टू सी. हे जे सेन्सेस, टच जसं आपण फील करतो, सो हे जे सेन्सेस, सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत, दे आर सुपिरियर दॅन डेड मॅटर. टेबलला मारलं तरी देर इज नो सेन्सेशन. टेबल कॅनॉट सी, बरोबर? कपाट, फ्रीज कॅनॉट सी एनिथिंग, बट युअर आईज कॅन सी. सो their senses, 5 sensory organs that we have, they are superior to dead matter. Dead matter म्हणजे हे टेबल, हा लॅपटॉप, बंद झालेला लॅपटॉप इज डेड मॅटर. हा नुसता मोबाईल फोन, दिस इज डेड मॅटर. सो सेन्सेस आर बेटर, सुपिरियर, हायर दॅन डेड मॅटर. And mind is higher than senses, and intelligence is higher than mind also, and soul is superior to इंटेलिजन्स ऑल्सो. सो कृष्ण हे का देत असेल ऑर्डर अशी? ही हायरार्की, असं आपण म्हणतो ना की त्या आधी कॉर्पोरेटर असतो, त्याच्यावरती MP असतो, त्याच्यानंतर कॉर्पोरेटरच्या वरती MLA असतो, त्याच्यावरती MP असतो, त्याच्यावरती मिनिस्टर असतो, आणि त्याच्यावरती प्राईम मिनिस्टर असतो. अशी ऑर्डर का द्यायची गरज आहे? वाय इज दिस ऑर्डर इज गिवन? कॅन यू गेस? काय परत बोला प्रभूजी. अशी ऑर्डर का दिली? ह्याच्यापेक्षा हा मोठा, ह्याच्यापेक्षा हा मोठा, ह्याच्यापेक्षा हा मोठा, अशी ऑर्डर कृष्णांनी, भगवंतांनी का दिली असेल या वर्ष मध्ये? एनी गेस? त्यांना काय सांगायचं त्याच्यामधून, की अशी सगळ्यात छोटा हे, मग हा, असं का सांगायचंय भगवंतांना? प्रकृतीपेक्षा प्रकृतीपेक्षा नाही, इंद्रियपेक्षा प्रकृती. ओके. सो भगवंत काय सांगतात त्याच्यामध्ये की आपली अटॅचमेंट कुठे असते? आपली अटॅचमेंट इथे असते सगळीकडे. वी आर पॉझेसिव्ह अबाउट अवर गेम, अवर क्रिकेट बॅट, दीज आर ऑल डेड मॅटर्स. त्याच्यानंतर आपले सेन्सेस, दॅट्स वेअर अवर ऑब्सेशन इज. त्याच्यानंतर अवर माइंड, त्याच्यानंतर अवर इंटेलिजन्स, वी आर ऑल प्राऊड ऑफ ऑल दॅट. आणि सोल इज द सुपिरियर, सगळ्यात सुपिरियर सोल आहे. सो सोल, वी शुड बी वरीड अबाउट द सोल. वी शुड, ऍज अ सोल, वी आर सोल, अँड सोल should be in control of all the intelligence, mind, and senses. So soul should be able to direct the activities of intelligence. Soul should be able to control the mind. Soul should be able to control the sense objects. You should not let sense object go their way. सेन्स ऑब्जेक्ट ना कम्पेअर केलं जातं घोड्यांबरोबर. रथाचे घोडे असतात ना, सो जसं प्रत्येक घोडाला वाटलं आपण इथे जावं तो इथे जाईल, हा घोड्याला वाटलं इथे जाईल, 5 घोडे 5 डायरेक्शनने गेले तर रथ मोडून जाणार. सो पण म्हणून काय केलं पाहिजे की त्या सारथीने लगाम उठून कंट्रोल केलं पाहिजे, आणि सारथी कोणाच्या गायडन्स खाली काम केलं पाहिजे? तर ते जो रथामध्ये बसलेला मालक आहे त्याच्या गायडन्सने काम केलं पाहिजे. सो त्याला जिथे जायचं तिथे नेलं पाहिजे, ना की उलट की घोड्याने जिकडे पाहिजे तिकडे घेऊन जातात त्या मालकाला. सो दॅट इज द अनालॉजी ऑफ चॅरिएट. आणि सो वी शुड बी इन चार्ज ऑफ अवर facility given by Krishna. What facility? We have intelligence, we have mind, we have senses, and we have dead matters. We have control over all these things. So we should be in charge. We should control. We should do things as we want to do, not the other way around. Don't do things which our senses, don't see things which your senses want to show you or your mind want to show you. Don't go where your mind takes. Ask mind to go where you want to go. So त्याच्यासाठी ही हायरार्की दिली आहे as a reminder that you are in charge. So you are superior. So take control of your life.
Don't just get dragged where your mind takes it or your senses takes it. So तो एक खूप important verse आहे ही. So you can read the purport from Bhagavad Gita when you will receive it. आणि ती समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. So then we should know की superior कोण आहे, then he should be in charge. That's how this verse explains. But very nice verse. All verses chanted very nicely home. ही पण आहे, तुझी बहीण पण करणार आहे आता? हा करणार आहे ती पण, तू तिचा करणार उद्या आहे. आहे. उद्या आहे तिचा? उद्या आहे तिचा. ऑल राईट. आता नाहीये, घरी पण नाहीये ती, नाही तर मी तिला आताच घेतलं असतं. नाही मी पण ती म्हणजे ती स्कूल वरून आली आणि आई सोबत कुठे ते आई काय करे गेली तिच्या सोबत गेली ना. बर बर, ठीक आहे ठीक आहे, काय हरकत नाही, चालेल चालेल. कारण ओम किती केले? 3 वर्सेस केले का ओमने? 5 केले. 5 केले. ओ व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. कारण की ओम करता है, दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग इट. सो रिसेंटली ही जॉइन्ड एंड फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्टेड फॉर 5. सो आई मीन दैट इज अ वेरी बिग विन. That Yes, Om, yes, yeah, yes. because that confidence also of chanting 5 shlokas, that is a very good Yes, yes, thing yes. that No, he you've chanted taken up. also very nicely. Yeah, very very nice. So otherwise newcomers, they are very apprehensive And of I chanting asked the shlokas. I asked most difficult question to you, which you answered. So don't worry. So really appreciate the efforts you have taken, and really appreciate the way you chanted. Very nice. Very Okay, nice. Mataji. Okay, chalo. So we will end our session here. Thank you so much. And then tomorrow again we will have a similar session that will be for the kids between up to 9 years. So from 5 years to 9 years. So please join us tomorrow again. Thank you, everyone. Thank you, Prabhuji. Thank you, Hare Divisha. Krishna, Mataji. Bye. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Hare Krishna. Nityangi, are you there? Hare Krishna Mataji. Yeah, Hare Krishna. Dandavat pranam, Nityangi. Dandavat pranam. अब ये नित्यांगी कौन सी है और गौरांगी कैसी है, कैसे पता चलेगा मैं मुझे? नित्यांगी हूँ. अच्छा ओके ठीक है, वेरी नाइस. तो पहले नित्यांगी बोलेगी. नित्यांगी बोलेगी ना. बोलो. ओके चलो. भगवद गीता. आप कितने श्लोका बोलोगे बेटा? कितना श्लोक बोलने वाली हो? 10. 10. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ. भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 30. भगवान वाच मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतस निरासी निर्ममो युधस्व विगज्वरा. हे अर्जुन, तुम अपने सारे कर्मों को मुझे देख दो और मेरे ज्ञान को तुम ले लो. लाभ की इच्छा मत करो, स्वामी मत बनो, आलस छोड़कर युद्ध करो. भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 36. भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इवैडिडम. हे अर्जुन, इस रजोगुण में रहने से काम उत्पन्न होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है, जो इस संसार का पापी शत्रु है. भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 43. भगवान वाच एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम. हे अर्जुन, बोलो. हे अर्जुन, तुम अपनी भौतिक इंद्रियों को छोड़कर आध्यात्मिक इंद्रियों को लेकर काम जीत लो. भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 2. भगवान वाच
परित्राणाय एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजा ऋषि विदु सकालीने महता योगो नष्टा परंतप। हे अर्जुन, यह ज्ञान परंपरा द्वारा लिया जाता है, वैसे ही राजा और ऋषि लेते हैं, और ये समय काल चक्र में लुप्त हो गया है। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 4 भगवान वाच बहुनी में व्यततानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेदे सर्वाणि न त्वं वेदे परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, परंतु वो मुझे याद है और तुम्हें नहीं याद। भगवद गीता चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 7 भगवान वाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अधर्म फैलेगा, तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 8 भगवान वाच परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थ संभवानि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 9 भगवान वाच जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतं त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नैति मां स एति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य प्रकृति से जान लेता है, फिर वो इस शरीर को छोड़ने के बाद सीधा मेरे पास आता है, फिर वो पुनर्जन्म नहीं लेता। भगवद गीता चैप्टर 3 चैप्टर 4 श्लोक 34 भगवान वाच वही है, तत्विद्धि है, ये तुमको नहीं आती, बोलो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शन। हे अर्जुन, तुम अपने गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बोलो। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 31 नायम भगवान वाच नायम न अयं लोका अस्ति अवध्य अवध्येय कुत्य अन्य कुर सदम। इसको तात्पर्य अच्छे से याद नहीं है। हाँ ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। हो गया आपके 10 श्लोक हो गए बेटा? यस माता जी। ओके। तो नित्यांगी, कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। ऐसा क्यों बोलते हैं? कि अर्जुन जैसे मतलब वो क्लास में बोलते हैं वैसे ही बोला ना उन्होंने कि 20 टेबल्स किसको याद है? 2 1 2 2 2 है ना, 2 का टेबल किसको याद है? तो 4 बच्चे हाथ ऊपर करते हैं कि मुझे याद है। 3 का, 4 4 का, कुछ बच्चे होते हैं उनको याद नहीं आता है। 8 का 9 का टेबल याद नहीं रहता है। तो ये क्या वैसे है क्या? मेमोरी कॉन्टेस्ट है कि भाई कृष्णा इज सेइंग कि आपको याद नहीं, मुझे याद है।
कृष्ण को क्यों याद है और अर्जुन को क्यों याद नहीं? अर्जुन ने पढ़ाई नहीं की थी बराबर से, याद नहीं किया था बराबर से। क्योंकि कृष्ण तो भगवान है। कृष्ण तो भगवान है, करेक्ट। सो इसीलिए सो कृष्ण, यस, वो कभी अपना शरीर बदलते नहीं है। वो he does not take birth, he appears, he just comes whenever he desire, he just comes and he has the same body, so he never changes body. So उनकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल है ना? हम तो स्पिरिचुअल स्पार्क है, हमारे बॉडी में छोटा सा स्पार्क है सोल का, बट कृष्ण तो पूरे सोल ही सोल है, ही इज लाइक होल सोल, है ना? तो ही नेवर चेंजेस हिज बॉडी, तो ही इज भगवान। एंड देयरफॉर एज यू रिमेम्बर, कल आपने क्या खाया था, परसों क्या खाया था, वैसे कृष्णा हैज, he is just living one life and his life never ends. He is just living eternal life, therefore he remembers everything, and plus he is Bhagwan, so he is all knowledgeable. He can do anything, all he can do anything, he is everywhere and he is all knowledgeable. So therefore he remember past, present, and he also know the future. उनको आगे का भी पता है क्या होने वाला है, नित्यांगी क्या करने वाली है कृष्ण को पता है, और गौरांगी भी क्या करने वाली है बड़ी होके, वो भी पता है उनको, है ना? सो दैट्स व्हाई इट्स, अर्जुना भूल जाता है, बट इस हम भूल जाते हैं, जैसे हम क्या थे हम भूल जाते हैं, बट कृष्ण सब कुछ याद रखता है और वो हमें हमसे अच्छे काम करवा लेगा। दैट्स व्हाई वी शुड बिकम नाइस डिवोटी, and then we should become instrument, so that using us Krishna can get things done. Whatever he wants to do in this world, he can use us, he can help get those things done from us. जैसे अर्जुन को बोला आप निमित्त मात्र बनो, क्या बोला था? निमित्त मात्र बनो, कि you take the credit. सब लोग बोलेंगे वाह वाह अर्जुन ने किया, that's okay. So Krishna does not want credit, but he wants things to be done. He wants more devotees to be made, more people come back to Krishna, है ना? So for that we should do our part, we should cooperate with him, we should do our little service. Okay? बहुत अच्छा नित्यांगी। बीच बीच में तो मुझे लग रहा था, जब भी आप एक्सप्लेनेशन बता रहे थे, मुझे लगा भगवान स्वयं बोल रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। और नित्यांगी को तो सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाना है ना, प्रभुपाद का मिशन आगे लेके जाना है ना। माता जी, इसके लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ तो करेगी ना माता जी, श्लोका तो लर्न करेगी, अभी 10 किया है, अभी कुछ दिनों के बाद 20 कर लेगी। अभी सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड हो गया, तो सेकंड चैप्टर के जितने बचे वो लर्न कर लेना थर्ड चैप्टर के और भी 10 बचे हैं, वो लर्न कर लेना, फिर हमें वीडियो भेजना। सो नित्यांगी माता जी बोल रही है कि पढ़ाई का भी आप ध्यान रखना चाहिए, ये सच है, क्योंकि अभी आप जाओगे ना प्रीचिंग करने, तो लोग बोलेंगे कि हम तो you will know, you will have to preach to people, जो लोग आज साइंस आप बोल रहे कि हम तो साइंस मानने वाले हैं, हम क्यों भगवान माने? भगवान को क्या है? देखो आज हमको गर्मी होती है तो हम पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, आपके भगवान आते हैं क्या हमारे ना ठंडा कराने? सो ऐसे झगड़ा करने वाले लोग हैं आज, तो उनसे अगर आपको प्रीच करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज भी बोलनी पड़ेगी। तो वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे होता है, ठंड एसी कूलर कैसे करता है, एंड वो एसी बनाने की बुद्धि कहाँ से आती है? कोई बुद्धि लेके आया क्या? बाजार में मिलती है क्या बुद्धि? नहीं मिलती। तो वो बुद्धि तो भगवान ने दी है ना? तो इस तरह से आपको प्रीच करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको तो योर ऑडियंस जो प्रीच करेंगे ना, वो सब अभी बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सब स्मार्ट कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। सो आपको भी उनकी तरह बनना पड़ेगा, उनसे ज्यादा बनना पड़ेगा उल्टा, और फिर वो आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो हम लोग वी नो व्हाट यू नो, बट वी ऑल्सो नो समथिंग दैट यू डोंट नो। जो आपको नहीं पता वो भी हमें पता है, आपको जो पता है वो तो हमको पता ही है। एंड देन दे विल बी अट्रैक्टेड, दे विल नो अच्छा ऐसा क्या है जो आपको पता है, हमको पता ही नहीं है, फिर आप उसको कृष्ण के बारे में बता सकते हैं उन लोगों को। सो इसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो बोलेंगे कि नहीं आपको तो पता ही नहीं क्या है ना? लिफ्ट कैसे ऊपर जाती है आपको क्या पता? एसी कैसे ठंडा करता है आपको क्या पता?
आप लोग को कुछ नहीं पता, फिर देन वो आपकी नहीं सुनेंगे, प्रीचिंग ही नहीं होगी। सो जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका में, तो वो ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ के, वो तो साइंटिस्ट लोग सिर्फ डिबेट करते थे, साइंटिस्ट, कैन यू इमेजिन, है ना, उनके काफी कॉन्वर्सेशन है साइंटिस्ट के साथ, तो उन्होंने साइंटिस्ट से डिबेट किया और उनको प्रूव किया कि सोल का एग्जिस्टेंस होता है, आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है। और फिर वो साइंटिस्ट माने और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर प्रभुपाद जी ने पढ़ाई नहीं की होती तो वो जा पाते अमेरिका? नहीं, अमेरिका कैसे जाते? वो क्या, कहाँ, वो बंगाली में बोलते क्या अमेरिकन के साथ? नहीं, उनको नहीं समझ में आती, फिर तो प्रीचिंग ही नहीं होती, इस्कॉन ही नहीं बनता, है ना। So because Prabhupada learned, he was a scholar in English. He could go to America, he could speak with the people in America in their language, he could argue with them. Because ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी गए और सब भक्त बन गए, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने भी काफी झगड़ा, डिबेट किया, आर्ग्यू किया, लोग अपनी अपनी फिलोसफी लेके आते थे, हम तो ये मानने वाले हैं, हम ये मानने वाले हैं। तो इट वॉज नॉट इजी। सो अगर आपको उनसे डिबेट करनी है, आर्ग्यू करना है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना। पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। और वो सब नॉलेज आपको पढ़ाई में से आएगा। इसके लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, भक्ति भी नहीं छोड़नी है। ओके चलो, बहुत अच्छा नृत्यांगी। चलो अभी गौरांगी का। गौरांगी आ जाओ, जल्दी आओ। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 13 भगवान वाच मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतस निराशेन विगज्वर। हे अर्जुन, तुम अपने सारे कर्मों को मुझे दे दो, मेरे ज्ञान को तुम ले लो, लाभ की इच्छा मत करो, स्वामी मत मानो, आलस छोड़ के युद्ध करो। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 36 भगवान वाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशन महापाप्मा बुद्धि एनम इवैरियम। हे अर्जुन, तुम अपने आध्यात्मिक भौतिक इंद्रियों को नहीं, क्या रजोगुण में रहने से काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और वो इस संसार का पापी शत्रु है। तीसरा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 43 एवं बुद्धि भगवान वाच एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, तुम अपने भौतिक इंद्रियों को छोड़कर आध्यात्मिक इंद्रियों को लेकर काम जीत लो। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 2 भगवान वाच एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजा ऋषि विदु स्वकालीन महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, मैं और तुम, यह ज्ञान परंपरा द्वारा दिया जाता है, ऐसे राजा ऋषि भी वैसे ही ज्ञान लेते हैं। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 4-5 भगवान वाचा भवनी में विचितानि जन्मानि तौ च अर्जुन तानि अहं वेद शर्माणि नात्वं वेत्ते परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, वो मुझे याद है परंतु तुम्हें नहीं याद। भगवद गीता चैप्टर 4
श्लोक 7 7 यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनोचितामि अहम्। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अधर्म फैलेगा तब तक मैं इस धरती पर उतार लूंगा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 8 परित्राणा भगवान आच परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवानि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 9 जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्त्वतं त्यक्त्वा देहिं पुनर्जन्म माम् एति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म दिव्य प्रकृति से जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे पास आता है, कभी वो पुनर्जन्म नहीं लेता। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 34 तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानी तत्त्वदर्शन। हे अर्जुन, तुम अपने गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 3.31 नहीं किया आपने? वो प्रभु जी इसको थोड़ा याद नहीं है वो। ओके ओके। ये गौरांगी अभी कौन से स्टैंडर्ड में है? अभी ये फर्स्ट में जाएगी। ये केजी में। बाप रे, केजी में है। और नित्यांगी? नित्यांगी अभी सेकंड में है। बाप रे, बहुत अच्छा किया दोनों ने। तो गौरांगी, पुनर्जन्म, कृष्णा बोलते हैं मेरी स्टोरी सुनने के बाद आप पुनर्जन्म नहीं लेंगे, तो पुनर्जन्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो कृष्णा की स्टोरी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, वो भी डिसाइड करेंगे ना। हाँ, मैं सुनती हूँ। आप सुनती हो तो आपका तो पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब आपको एक बार कृष्णा बुक पूरा पढ़ लिया आपने, तो फिर तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, कृष्णा ने बोला है। ओके ओके, वेरी नाइस ऑल। आपने बहुत अच्छे से चैंटिंग किया। एंड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप फर्स्ट में जा रही हो। मुझे लगा आप बहुत बड़ी हो और सब आपको सारे वर्सेस आते हैं। सो बहुत अच्छे से आपने याद किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छा गौरांगी, वेरी नाइस। अब तो सबके लिए आइडल बनना कि देखो मैं भी, गौरांगी कर सकती है तो हम सब, गौरांगी तो आइडल बनेगी सब बच्चों के लिए कि नहीं देखो गौरांगी कर सकती, तुम लोग भी कर सकते हो, है ना। गौरांगी तो बोलती नहीं है जल्दी। नहीं कोई बात नहीं माता जी, छोटी है, कोई बात नहीं, बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया गौरांगी ने। अभी बाकी के 10 श्लोक का भी लर्न कर लेना। ओके, गौरांगी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अपने चैंटिंग राउंड्स भी डालना भूलना नहीं। चैंटिंग नहीं करती है अभी। अरे चैंटिंग नहीं करती गौरांगी, ऐसे कैसे? सैटरडे 10 माला करेगी, संडे को 10 करेगी, बोलती है पूरे हफ्ते का हो जाएगा उसमें। नहीं 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 नहीं, हम एक ही दिन में सब खाना खा लेते हैं क्या? सैटरडे संडे खाना खा लेंगे, फिर अगले हफ्ते भर खाना खाने का काम ही नहीं, ऐसे सोचते हैं हम लोग। कहाँ झंझट, कहाँ खाना खाएंगे, ऐसे करते हैं हम लोग, नहीं ना। रोज रोज अपना जितना है उतना ही खाता है ना। तो भगवान भी आते, भगवान भी सोचते अरे गौरांगी आज मुझे याद ही नहीं कर रही है, कहाँ गई गौरांगी, अरे खेल में इतने मग्न हो गए कि मुझे याद ही नहीं कर रही है। तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। तो भगवान को तो हम नाराज नहीं कर सकते ना। नहीं। हाँ, तो फिर हमको तो करना पड़ेगा रोज चैंटिंग, कि भगवान भी हमारी रोज याद करते, तो हमें भी भगवान की रोज याद करनी चाहिए, है ना। हाँ।
हाँ, तो भगवान की खुशी के लिए हमें रोज चैंटिंग करना है, रोज। ये बोलती है कि रात का चैंटिंग खाना नहीं करूं, नहीं चैंटिंग नहीं। नहीं करूं, और ये निमाई को खिला सकती है, मतलब लड्डू गोपाल निमाई, निमाई को ये सब सेवा करेगी, निमाई का, निमाई को नहलाएगी, भोग लगाएगी, श्रृंगार करेगी, आरती करेगी, सब करेगी। बोलती मैं निमाई का सेवा कर ले रही हूँ तो ठीक है ना अभी। तो निमाई का सेवा करते करते ही चैंटिंग कर लेना। हाँ, वो उस समय डांस करेगी, कीर्तन करेगी, सब करेगी, लेकिन ऐसे माला लेके नहीं बैठती। बोलती हाँ, मुझे लेकिन नहीं हो रहा है अभी। प्रभुपाद जी ने बोला है कीर्तन तो करना है लेकिन माला भी करना है। तो अगर आपको प्रभुपाद जी का मिशन आगे लेके जाना है तो आपको माला तो करनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी बोलेंगे कि ये तो मेरा सुनती नहीं है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवे। आप यहाँ पे तो गुरु का महत्व है, गुरु से आप उपदेश ले रहे हो, तो उपदेश लेके सुनोगे ही नहीं, उसको अपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। तो गुरु से उपदेश लेंगे तो गुरुजी ने जो बोला है वो तो करना तो पड़ेगा ना भैया, है ना। नहीं तो फिर गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो श्रील प्रभुपाद नाराज हो जाएंगे हमसे, कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे हमसे, तो आपको अच्छा लगेगा। निमाई नाराज हो जाएंगे हमसे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। इतने नाम दे और सब में शक्ति दी है, तो हमको तो करना पड़ेगा वो ये चैंटिंग। तो रोज करेगी भी गौरांगी। रात का खाना खाना ही नहीं है गौरांगी जब तक चैंटिंग नहीं होता। एक माला तो करनी है, फिर ही रात का खाना खाना। मेरी संडे को छुट्टी रहती है, जब मैं आती हूँ माला वाले में, मेरा हरदम माला हो जाता है, ऐसे नहीं हो पाता मेरा। क्या नहीं हो पाता? जब मैं संडे को ज्वाइन करती हूँ ये वाला मीटिंग माला वाला, हाँ तब मेरा तो पूरा 5, 10, 6 माला हो जाता है। ऐसे ही नहीं हो पाता है जब मैं स्कूल जाती हूँ। हाँ देखो, तो इसके लिए चैंटिंग सेशन ज्वाइन करना है। और आप गौरांगी को भी बोलो कि कल और परसों छुट्टी है, तो मैं वेरी और नाइस, माला कर सकती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कल भी चैंटिंग सेशन ज्वाइन करना। छुट्टी है नित्यांगी, तुमको टाइम टेबल नहीं पता, इसको माता जी टाइम टेबल नहीं पता। मेरी क्लास में अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई मैम बात से नहीं। माता जी से बात करनी। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अभी आप नित्यांगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की गौरांगी से भी आपको माला कराना है। ओके, और और रोज गौरांगी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नित्यांगी का होमवर्क कराना। हाँ मुझे जो माला कराना है मुझे पता है। भी मुझे सेकंड का तो नहीं पढ़ा पाती। ठीक है, ठीक है, फिर कल जपा सेशन ज्वाइन करना। हाँ, ठीक है सुबह दोनों। है ना 8 o'clock। हाँ 8 o'clock, यस। ओके। हरे ठीक है। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नित्यांगी, हरे कृष्णा गौरांगी, हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम आप दोनों को प्रभु भी, जी, मेरा एक सबको। क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ? हाँ माता जी पूछिएगा। प्रभु जी, ऐसा मुझे किसी ने पूछा कि जैसे भगवान ने बोला है कि जब अधर्म होगा तो मैं प्रकट होऊंगा, जब जब इस धरती पे अधर्म फैलेगा तब तक मैं प्रकट होऊंगा। थोड़ा बंद करो गौरंगी। तो अभी अधर्म नहीं हो रहा है क्या? ऐसा धरती पे इतने सारे तो अधर्म हो रहे हैं, कश्मीर में इतना हो रहा है, यूक्रेन में इतना हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो अभी और कितना होना बाकी है? सो अभी जो कृष्णा का अपीयरेंस है ना, नाम कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। सो अभी तो नाम रूप में कृष्ण ही है ना, जो कृष्ण का नाम ले पा रहा है उनका तो शुद्धिकरण हो ही रहा है। सो कली काल में ही इज अपियरिंग एज हिज नेम, हिज अपीयरेंस इज इन हिज नेम। जैसे नाम नाम आकारी इज, मतलब नाम में ही कृष्ण है, और कृष्ण का इज ही कंप्लीट कृष्ण इज इन हिज नेम। तो जो चैंटिंग करेगा ही विल एक्सपीरियंस कृष्णा, ही विल एक्सपीरियंस फुल कृष्णा। मतलब कृष्णा को बर्थ लेके, माता पिता बर्थ लेके फिर अर्जुना जैसे व्यवहार करने का जरूरत नहीं है। फिर आपका अगर चैंटिंग हो रहा है डेली, तो दैट इज एज गुड एज योर कनेक्टिंग विद कृष्णा। और रही बात जो प्रोटेक्शन की है, जो अत्याचार हो रहे हैं, सो जो हो रहा है वो जो अट्रॉसिटीज हो रही है उस पे ऑल दोज आर हैपनिंग, जो उनके सैंक्शन के बिना तो कुछ होता नहीं है। सो कृष्णा के सैंक्शन है तभी ये हो रहा है।
जैसे हम सिग्नल जंप करते हैं तो हमें फाइन आता है 500 रुपए का, या व्हाटएवर, एक फाइन का चालान आता है। सिग्नल ब्रेक जंप किया तो गाड़ी रुकी नहीं सिग्नल पे, तो अब ये तो जो जो पे कर रहा है 500 रुपया, तो उसको भी पेन है, उसमें भी तकलीफ होती है, 500 रुपया देना पड़ रहा है मुझे। बट सो जो जो रूल के हिसाब से है वो हो रहा है, जो और जिसमें सफर हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, जिसको सफरिंग है वो हो रही है। बट वो सफरिंग क्यों है? क्योंकि उसने सिग्नल जंप किया। वैसे ही आज जो लोगों को सफरिंग क्यों है? क्योंकि उनके पास कर्मास वैसे है, और जिसके जिसके उनको रिएक्शंस ड्यू है, तो वो आज आ रही है, किसी भी फॉर्म में आ रही है। सो कृष्णा व्हेनेवर, जो जहां कहीं कृष्णा बोलते हैं कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा, तो हम सोचते हैं कि प्रहलाद महाराज को जैसे प्रोटेक्शन दिया वैसे ही प्रोटेक्शन है, वैसे प्रोटेक्शन हम अपेक्षित करते हैं कि कृष्ण हमेशा आए और उस तरह से प्रोटेक्ट करे। बट जरूरी कृष्णा बोलते वो नहीं बोलते। कृष्णा बोलते हैं, जैसे 9वें चैप्टर अध्याय में भी वो बोलते हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति, माय डिवोटीज विल नेवर पेरिश। सो ये जो पेरिश का जो शब्द है, प्रणश्यति का जो शब्द है, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, कि व्हाट इज प्रोटेक्टेड इज योर आध्यात्मिक प्रगति प्रोटेक्ट करती है। कृष्णा फिजिकल बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करते, बिकॉज कृष्णा ही नहीं बोला है कि आप बॉडी तो हो नहीं, आप सोल हो। सो आपका जो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस है, जो अपने आध्यात्मिक प्रगति की है, कृष्णा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके लिए कृष्णा आते हैं। एंड उसके व्हाट इज सिंपलेस्ट वे इन विच ही इज अपियरिंग इज इन बाय वे ऑफ हिज नेम। जैसे नाम अकारी इज आई हैव इनकारनेटेड एज अ नाम, सो कृष्णा इज देयर इन हिज नेम। बट जैसे जब कृष्ण 5000 साल पहले भी थे, तभी भी लोग उनको नहीं देखते थे और उनको कृष्ण नहीं मानते थे, तो वैसे भी आज भी लोग हैं जो मंदिर में नहीं आ पाते। वहां पे कृष्णा अवेलेबल है, कृष्णा इज अवेलेबल देयर इन फॉर्म ऑफ अ डीटी, कृष्णा इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ हरिनाम, चैंटिंग में कृष्णा है, प्रसाद में कृष्णा है, कृष्णा इज एवरीवेयर। बट अगर कोई कृष्ण को नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता कृष्ण की तरफ, तो वो कृष्ण वो फिर मतलब यहाँ कृष्ण होके भी वो इग्नोर करेगा और अपने इंडिपेंडेंटली जीने की कोशिश करेगा। जैसे दुर्योधन कृष्ण को नहीं मानता था कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण सामने होते हुए भी उनसे कभी उनका लाभ नहीं हो पाया। जब उन्होंने नारायणी सेना मांगी, उनको मिल गई, वो बहुत खुश हुए, मेरी इतनी सेना मिल गई। पर भीष्मा ने उनको बोला कि तुम मूर्ख हो, ये ऐसे कैसे करके आए, तुमने नारायण को नहीं छोड़ा और नारायणी सेना के लेके क्या करोगे। बट दुर्योधन ने नहीं समझ पाता था। जब शांति दूत बन के गए थे, दुर्योधन सोच रहा था मैं तो इसको अरेस्ट कर लूंगा, या इसको मैं अच्छा खाना वाना खिला के गिफ्ट दे के अपने तरफ कर लूंगा, क्योंकि वो भगवान को देखने के लिए जो आगे आंखें चाहिए, या जो कृपा चाहिए, संतों की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, या भगवान की अपनी कृपा चाहिए, ये अगर 3 चीजें नहीं है, तो कोई भगवान सामने खड़े भी हो वो उनको नहीं देख सकता। और भगवान को जब तक तुम देखोगे नहीं, जब तक तुम भगवान से आप याचना जिज्ञासा ही नहीं करोगे, आप प्रोटेक्शन मांगोगे ही नहीं, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। वैसे भगवान हम सबके हृदय में भी है, वो आतंकवादियों के हृदय में भी है, बट आतंकवादी आज नहीं मान रहे कि कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करो, तो कृष्णा हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कृष्ण ने हमको फ्री विल दी है। फ्री विल मतलब जब अंत में भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63 श्लोक में जो कृष्ण बोलते हैं ना, यथा इच्छासी तथा कुरु, पूरी भगवद गीता बोलने के बाद, 18 अध्याय बोलने के बाद भी कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि विमृशेन अशेषेण यथा इच्छासी तथा कुरु, यथा जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो। तो वो जो हमें स्वातंत्र दिया है और ज्ञान भी दिया है, तो ज्ञान यूज करके हमको सही चॉइस करना है। बट कृष्ण हमारा चॉइस एलिमिनेट नहीं करते। हमको अगर गलत चूज करना है तो उसके भी हमें स्वतंत्र है कि हम गलत चॉइस करके उसके सफरिंग भी भोग सकते हैं। सो वो स्वतंत्र है और वो कृष्ण ने दिया है, और वो हमसे वो लेना छीनना नहीं चाहते, तो हमारे पास स्वतंत्र हमेशा रहता है। तो जो आज सफर हो रहे लोग, नोबडी, कोई बोल नहीं सकता कि उसने मतलब वो उनके कर्मों का फल आज भोग रहे हैं।
और जो डिवोटी भक्ति कर रहे हैं वो भी उनकी श्रद्धा से कर रहे हैं, वो भी उनको फायदा हो रहा है। वो 2 साल में उनकी आध्यात्मिक प्रगति 20 साल जैसे हो गई। जो डिवोटीज कनेक्शंस में थे ना, जो डिवोटी कनेक्टेड थे, उन्होंने 2 साल में, पिछले पैंडेमिक में 2 साल में 20 साल जितने प्रोग्रेस करते ना, उतना प्रोग्रेस कर लिया उन्होंने। बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर लिया। सुबह दोपहर शाम वो सुनते थे, भागवतम सुनते थे, चैतन्य चरितामृत सुनते थे, भगवद गीता सुनते थे, भक्तों से सुनते थे, ऑनलाइन सुनते थे, वृंदावन से सुनते थे, मायापुर से सुनते थे। पीपल यूज दिस लास्ट 2 years, जिसको हम बाकी आप जनता से पूछोगे तो वो बोलेंगे बहुत ही दुखद स्वप्नदायक था, दुखद स्वप्न था। 2 साल पूरा डिवास्टेशन हुआ, बहुत बर्बाद हो गए, बहुत नुकसान हुआ। पर भक्तों का लिए ये लास्ट 2 साल इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। तो भक्तों तो ऐसा नहीं चाहते कि वापस पैंडेमिक आए, पर भक्तों हर कैलामिटी को भक्ति में कर देता है। हर कैलामिटी को वो कृष्ण के यूज करता है, कृष्ण के और नजदीक जाने के लिए। सो भक्त को जितने भी वो तकलीफ में हो, भक्त को वो he use that opportunity, he take that opportunity to go closer to Krishna. So इस तरह से भक्त को ये अफेक्ट नहीं किया, भक्तों को ये अफेक्ट नहीं किया। बाकी सबको इसका अफेक्ट हुआ, निगेटिव अफेक्ट हुआ, जैसे कश्मीर का हुआ मुद्दा या कहीं भी हुआ। सो जो हो रहा है वो अपने अपने कर्मों के फल है उनके, तो वो उसके लिए हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, पर आज उनको ज्ञान चाहिए नहीं। आप उनको बता ही नहीं सकते, बिकॉज आज दे आर इन सो मच लोअर मोड्स में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है इतने, कि आज वो भक्ति का ज्ञान नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है। सो वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम एट द मोस्ट, बट नन ऑफ द डिवोटीज जो भक्त थे और भक्तों के संग में थे, उनको लास्ट 2 साल they प्रोग्रेस सो मच। मतलब फॉर माय पर्सनल एग्जांपल आल्सो, कि जो हम 5-10 साल में जितने प्रोग्रेस करते हैं उतने लास्ट 2 साल में कर पाए, बिकॉज हम भक्तों के संग में थे। सो जितना भी बुरा समय आए, अगर हमारी श्रद्धा है, हमारी साधना है, तो वी कैन यूज एवरी कैलामिटी टू गो क्लोज टू कृष्णा। सो कितनी भी बुरी आए कैलामिटी, और बुरी कैलामिटीज तो आएंगी, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। हम दुखालय शाश्वतम ऐसे नहीं लेबल लगाया है, वो सच में है। सो समटाइम्स हमको रियलाइज नहीं होता, हम अच्छे से रहते हैं तो हमें रियलाइज नहीं हो पाता कि ये एक्चुअली है दुखालय शाश्वतम। बट जो है वो है, वो कैनॉट बी, जैसे वो तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो जी मुझे कोई अगर ऐसे मेरे रिलेशन में ही है तो मुझे ऐसा चैलेंज कर देते हैं ना, मैं उस चैलेंज को उनके तोड़ नहीं दे पाती हूँ मैं, मतलब मैं समझा नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि वो मुझे कौन से वो बहुत खिलाफ है, और वो ऐसा फिलोसफी घुसाते हैं। जैसे आपने बोला ना कि सच में जब पता नहीं होगा हम तो किसी को समझा नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें आंसर ही नहीं दे पाती हूँ। तो उनको ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। However, at our level we may not be equipped. जैसे पैदल होता है, पैदल लड़ने वाले सैनिक होते हैं, कोई रथ में सैनिक होते हैं, कोई हाथी पे होते हैं, और कोई फिर हवा में उड़ के युद्ध करते हैं। सो हर एक अपने अपने लेवल पे होता है। तो जैसे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली नॉन भक्त होते हैं। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे ये 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा और मैं भक्ति करूंगा। इस तरह का अगर किसी की जिज्ञासा हो तो उसके लिए डिबेट कर सकते हैं। बट अगर किसी का ये उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ डिबेट के लिए डिबेट कर रहे हैं, कि विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो उनसे विरोध करके हमारा नुकसान है। इन द सेंस इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो कोई अगर जिज्ञासु भक्त है कि मुझे ये 3 सवाल है, अगर ये 3 सवाल मेरे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर करे तो आई विल कंसिडर भक्ति। मैं भक्ति में आना चाहूंगा, मुझे पसंद है बाकी सब चीजें, तो मैं भक्ति करूंगा। इस तरह का अगर कोई हो तो उसमें इस तरह का कोई होगा तो ये उनमें वहां पे वी कैन इन्वेस्ट अवर टाइम।
not with these people. These people may not have any desire to become devotee, or they may not have any intention to become devotee. तो अगर वो, they will just waste our time. Not that they cannot be debated, for argument's sake we can debate with them, but उसमें then you have to and see, these are again भक्ति का जो टॉपिक है, why it is given by परंपरा, because because the knowledge beyond the point, the knowledge कृष्ण की मर्सी से आता है. ददामि बुद्धि योगम त्वाम येन माम उपयान्ति ते. सो तेषां सततक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम त्वाम येन माम उपयान्ति ते. What Krishna is saying here is that Krishna has to give intelligence for us to understand him. So हम अपने बुद्धि से एक स्तर तक जा सकते हैं. उसके आगे बढ़ने के लिए हमको कृष्ण से ही बुद्धि लेनी पड़ती है एडिशनल. सो अगर वो भक्तों को ही मिलती है, इसीलिए गुरु परंपरा का महत्व है, क्योंकि गुरु को मिली है, वो गुरु जानता है. ज्ञानीना तत्वदर्शिना मतलब ये क्या है, क्योंकि गुरु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम हिज गुरु, and that guru would have received it ultimately from Krishna. So Krishna जब additional ज्ञान देते हैं तभी हमको पूर्ण रूप से कृष्ण का ज्ञान होता है. हम अपनी बुद्धि से कृष्ण का ज्ञान नहीं कर सकते. अब ये बात आप किसी नॉन डिवोटी को समझा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके पास वो एडिशनल बुद्धि, उनके अपनी बुद्धि भी लिमिटेड है, प्लस उनको एडिशनल बुद्धि है ही नहीं, बिकॉज वो उनको चाहिए नहीं. सो देन दिस बिकम फ्यूटाइल डिस्कशन. Futile in the sense waste of time. However, there are 2-3 things which anybody can understand. One is that our actions have consequences. हमारी जो कर्म है ना, उस कर्म को हमको फ्रूट मिलता है, और वो डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना इतना डिफिकल्ट नहीं है. जैसे कि आपके जो रिलेटिव्स रहेंगे, आज अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अच्छा खाता पीना है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो उनका बर्थ एक झोपड़पट्टी में नहीं हुआ, या वो ऐसा बोलते हैं कि आप जो तुम भक्ति कर रही हो तुमको मिल रहे हैं, और मैं नहीं कर रहा हूँ, उससे अच्छे से मेरे पास है, तो भक्ति करने की क्या जरूरत? तो मत कीजिए, नहीं करना. सी, भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है. भक्ति करने की क्या जरूरत है, मत कीजिएगा. कृष्ण मतलब वो इस्कॉन को ऐसे चैलेंज बोलते हैं, कट्टरवादी मुस्लिम जैसे संस्थाओं का वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मुस्लिम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, वैसे तुम्हारे इस्कॉन सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही करता है और किसी को नहीं है, भगवान तो इतने हैं. तो वो उनको समझाने के लिए मुझे नहीं समझ में आता उनको मैं कैसे समझाऊं. उसमें ना स्तर पे है, अलग अलग लेवल्स पे जाना पड़ेगा. तो उनको सीनियर भक्तों से मिला सकते हैं ना प्रभु जी. सीनियर भक्तों से जरूर मिलाना, बट एट डिफरेंट लेवल ना माता जी, दे अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि एक लोग होते हैं जो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, हम ही जो है वो हम ही है, हम ही भगवान है अगर है तो. दूसरा बोलते हैं कोई नेचर भगवान है, बिकॉज नेचर से हमको बारिश आती है, सन सूर्य जाता है, सो नेचर इज गॉड. तीसरे जो लोग होते हैं जो डेमी गॉड्स के ऊपर बिलीव करते हैं. एक तो पूरे अभक्त है, या मतलब हम जो उसको एथिस्ट बोलते हैं कि देयर इज नो नथिंग लाइक भगवान, से लेके डेमीगॉड्स तक. नाउ डेमीगॉड वर्शिपर्स और नेचर वर्शिपर्स आर स्लाइटली बेटर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड देम देयर आर सम कंट्रोलर्स. हमारे बावजूद हम पूरी कंट्रोल में नहीं है, इस यूनिवर्स के कंट्रोल में हम नहीं है, कुछ भी हमारे कंट्रोल से नहीं होता. तो एटलीस्ट दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. एंड सो ये ना ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है इसका भी. उनके जो कुछ कंसेप्शंस होंगे ना, दे यू नीड टू आस्क देम कि व्हाट इज देयर कंसेप्शन ऑफ गॉड. इफ कृष्णा इज नॉट गॉड, डू दे बिलीव इन मेनी गॉड, कि गणेश जी गॉड है, शिव जी गॉड है, दुर्गा जी गॉड है. सो बी इट. आप उनकी ये करो, आर यू वर्शिपिंग देम एटलीस्ट? दैट इज द काइंड ऑफ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग. सी, accepting somebody else as God itself is a progress. Why? Because at least हम अपने आप से बाहर आ रहे हैं. आज मैं समझता हूँ मैं ही भगवान हूँ, उससे तो अच्छा ये बेटर है कि आप प्रकृति को भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे बारिश आ जाती है, ठंड आ जाती है, ये आता है, कोई कंट्रोल बटन नहीं दबाने वाला है, ठंड आ जाती है, एसी ऑन करना पड़ता है हमको. तो नेचर भी
नेचर आल्सो डेमोन्स्ट्रेट इट्स पावर ना. कभी अर्थक्वेक हो जाता है, ऐसे ही हजारों लोग मर जाते हैं, कभी फ्लड आ जाता है. मतलब इतना नेचर का भी मैसिव पावर दिखती है. सो देयर इज अ पावर आउटसाइड ह्यूमन. ह्यूमंस के अलावा भी पावर है और वो दिख रही है. ऐसा नहीं कि अनविजिबल है. कौन कर रहा है ये उनको शायद नहीं पता हो. सो अगर हम अपने आप से भी बाहर आके सोचने लगे कि और कोई भगवान है या और कोई पावरफुल पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ दिस यूनिवर्स, फिर भी ये प्रोग्रेस है. देन उससे प्रोग्रेस क्या है कि दिस पीपल ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, उनके भी देवताज है. सो जैसे 3.12 में बोला है कि दे आर इन चार्ज ऑफ सप्लाइंग वेरियस नेसेसिटीज टू द पीपल. सो दिस इज अगेन नेक्स्ट स्टेप कि नेचर भी अपने आप बारिश नहीं आती. इससे क्लाउड अपने आप नहीं बनते ना. एक क्लाउड बना सकता है कोई लैबोरेटरी में? कोई नहीं बना सकता. क्लाउड जैसे बादल हम बोलते हैं ना, बादल कहाँ पैदा होते हैं? वो सूरज की गर्मी के कारण आप समुद्र का पानी बन के उबल के वो बाफ बन के उसका बादल बन रहा है. आज लैबोरेटरी में एक बादल नहीं बना सकता कोई लैबोरेटरी में कितने भी साइंटिफिक लैब, क्योंकि बादल बनाने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं. व्हाट इज बादल? किस चीज का बनता है? धूल, बाफ है, धूल है, पानी है और हवा है. और ये 3-4 चीजें इंग्रेडिएंट्स आप किसी को दे बोलो साइंटिस्ट आप बादल बना लो, कोई नहीं बना सकता. तो देयर इज हायर इंटेलिजेंस, देयर इज समथिंग. एंड बादल इज व्हाट? बादल इज नथिंग बट वाटर टैंक है. क्लाउड एक जगह प्रोड्यूस होता है और मीलों दूर जाके वो बारिश करता है. मतलब मूवेबल वाटर टैंक से, मूविंग वाटर टैंक से, जिसके थ्रू एरोप्लेन जाता है, लीक नहीं होता. एरोप्लेन बादल से जाता है, अभी बारिश में 1-2 महीने के बाद कोई लीकेज नहीं होता. कोई बारिश एरोप्लेन गया इसके लिए टैंक लीक हो गया, ऐसा नहीं होता. जब जिसको जहां जहां करनी है वहीं आके बारिश करता है. फिर यहाँ बनने बंबई में बारिश बंद के वो वृंदावन में जाके भी बरस सकता है. तो ये फ्री ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सो दिस इज टेक्नोलॉजी, देयर इज ब्रेन बिहाइंड इट. अगर कोई इतना भी समझ में आए इसको, तो भी दे आर प्रोग्रेसिंग. देन नेक्स्ट लेवल इज उनका डेमिगॉड वर्शिप, कि एटलीस्ट ये प्रकृति ऑटोमेटिक नहीं है, इट्स अ मशीन, बट ये मशीन ऑपरेटर्स भी है. नाउ दोज ऑपरेटर्स आर डेमिगॉड्स. तो दैट इज अ नेक्स्ट प्रोग्रेस उनका होगा कि जब वो मानेंगे कि ऑपरेटर्स भी है इन चार्ज ऑफ दिस प्रकृति. And then all these operators can be respected, but can there not be a super operator, or can there not be a supreme operator? जैसे all ministers are respected, can prime minister, but prime minister is most respected, or president is most respected, king is most respected. Similarly, ये भी conception है. Now आप जितनी बुद्धि हो, आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितने आपके realization है, उतना आप समझोगे. जैसे 10वीं पास कराने के लिए 5वीं के स्टूडेंट को हम 10वीं का नहीं पढ़ा सकते, उसको भी प्रोग्रेसिवली जाना पड़ेगा. सो सबको आप पेशेंटली यू विल हैव टू डील विद देम, बट इस तरह से. एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन देम. ऑल्सो जो डिफिकल्टी होती है ना कर्मा के रिएक्शंस का, कि कर्मा के रिएक्शंस आज दिखते नहीं है हमको. आज गलत चीज भी करते हैं, हमको इमीडिएट रिएक्शन कुछ नहीं होता. वी सी की गुड बैड पीपल आल्सो डूइंग लिविंग कंफर्टेबल लाइफ. सो उसके लिए सिंपल एग्जांपल दैट वी डिस्कस इन क्लासेस की, जैसे कि आज द बर्थ दैट वी हैव टेकन, नन ऑफ अस हैव अप्लाइड फॉर अ होम. यहाँ हमको बर्थ लेना है. नन ऑफ अस रिमेम्बर कि हमने अर्जी दी थी कि हमको ये अच्छी फैमिली में जाना है, और अर्जी देते तो हम सारे और अच्छे फैमिली में चले जाते, या और अच्छा चीजें मांग लेते अपने लिए. रूप हो या गुण हो या कला हो, ये सब हम अपने लिए और लिख के मांग लाते. जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा था, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. तो हमको ये सब मिला है. तो कौन दे रहा है? ऐसे किसने दिया हमको? और जैसे हमको दिया, हमसे अच्छा भी काफी जनों को दिया है, और हमसे बुरा भी काफी जनों को दिया है. सो ये हमें ये सेट ऑफ गुण क्यों मिले, और जिसके लिए हमने क्या किया ऐसे कि ये इन जो बुरा है, मतलब हम काफी चीजें देखते हैं जो जिनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, या बचपन में ही कोई कई आजार हो चुके हैं, बीमार है, या बचपन से ही बीमार है, या बहुत ही 2 वक्त की खाना नहीं खा पाते हैं. वैसे भी हमारी
हमारे एज के ही, हमारे दिन ही बॉर्न हुए काफी जने होंगे, तो हम उनमें से क्यों नहीं है, और हम जो हमसे अच्छे हैं हम उनमें भी नहीं है। सो ये हमारा चॉइस को उसने किया, जो हमारा कर्मा है उसके अकॉर्डिंगली हमको ये चॉइस मिला। सो आज हमें ये मिला है, तो कल हमें क्या मिल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? तो दैट इज हाउ, दिस इज हाउ द प्रोग्रेशन हैपेंस। बट ये डिनर टेबल पे या चाय के टेबल पे करने वाला डिस्कशन नहीं होगा। सो इसके लिए व्हेन यू टेक देम टू टेम्पल, डिवोटीज टॉक विद देम, they can explain, because then they will be in the proper mood to understand. ऐसा टीवी न्यूज देखते हुए, देखो न्यूज चल गया अफगानिस्तान में या यूक्रेन में इतने लोग मर गए, देखो भगवान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, भगवान क्यों आएंगे? यू आर्ग्यू रिवर्स ले, क्यों आएंगे भगवान? जैसे आपने सिग्नल जंप किया, आपको फाइन लग रहा है, तो व्हाई शुड किंग बी बॉदर्ड? किंग ने रूल बनाया है, आपने सिग्नल आपने जंप किया है, उसका कर्मा आपको याद नहीं है, तो दैट इज नॉट किंग्स प्रॉब्लम। किंग ने रूल डिफाइन किए हैं, रूल भगवत गीता में दिए हैं, आप रूल पढ़िए और अकॉर्डिंगली आप एक्ट करिए। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, आप श्लोक बोल सकते हैं उनको। बट ये दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टू बी डन ऑन अ डिनर टेबल और ऑन अ, बिकॉज दिस इज अ मैं सेटअप नहीं इन विच समझा वी मीट। पाऊंगी, पर मैं बहुत हाँ अच्छे से समझ चुकी हूँ। पहले हाँ, मैं समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन बहुत नहीं सारी नहीं, चीजें आप आपने you मुझे meditate बताई, on this अच्छा लगा। and you will know, you know, all you are all devotees, and so definitely you know it well, but you meditate on it, then it's difficult, not so difficult to explain also. Not necessarily that every argument has to be done there and then, you know, you conducively you can ask them to visit temple where they will be little subdued, then they will be in a proper mood, थोड़ा submissive mood हो तो कोई सुन सकता है and सुन के understand कर सकता है, and our objective should be to help them. But if they are just arguing for the sake of arguing, जैसे dinner table arguments होते हैं ना, those don't mean much, वो उसका कोई ज्यादा meaning नहीं होता, so there it is avoidable to get into those arguments, because वो they will not lead anywhere, they will just end up spoiling relationships at the worst. So there you can तो टॉलरेंट हमको भी होना है थोड़ा at times not every battle has to be fought there and then, that's how we look at it. And sometimes in the relations में हमारे relatives के साथ especially it is best if somebody else come and tell them. जो हमारे रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनमें ये इस तरह का मतलब दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ फ्रिक्शन विद इन फैमिली। सो उसमें जितना अवॉइड हो सके, बट आप सीनियर भक्तों को बोल सकते हैं या मंदिर बुला सकते हैं प्रसाद के लिए, देर आपको उनसे किसी के बात करके रखना, एंड देन बोलना कि इनके कुछ सवाल थे, आप प्लीज एड्रेस कीजिएगा, एंड देन होपफुली कृष्णा विलिंग वो समझ जाएंगे। आपने इतना समय दिया और मुझे बहुत अच्छे से समझाया आपने। नहीं क्या कुछ नहीं। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। Okay, so thank you everyone. We will end the session here and see you tomorrow again for the shloka session of the younger kids up to 9 years. See you then. Bye. Hare Krishna.